somebody. All right. Auzubillahi Thank you. Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So my name is Muhammad Faisal. Today's session is going to be in English because it's an interview preparation for one of the student who is studying DevOps and SysOps and is going for his interview. I have developed this presentation in a way that teaches him the unified risk management system. This system basically is going to tell him and explain to him all the critical aspects of what needs to be done at a CISO level, as a CIO level, and a CISO and a CIO level to manage the whole organization from data aspects, customer delight. It infuses many other things, right? So this is going to be a high-level presentation. But before we do that, I am going to discuss a couple of other things in terms of how and what we are going to do to create all these different tracks that we're doing. So trends, today's topic is trends in the job market for emerging professionals, right? So as I said, my name is Muhammad Faisal. I'm the founder of An-Nafi. An-Nafi is an EduCall approved college, online college. It is approved by basically the UK government. EduCall is a regulatory authority, and they are the ones who are managing and regulating our quality assurance aspects and other things. We are offering a lot of diploma programs right now, level 3 and level 4. Level 5, 6, and 7 are going through the accreditation process right now. We are about to submit the documentation, but the programs are available. So if you want to study, you can do so. Today's topic is very different. It's very unique. The world is changing around us. The reason is that artificial intelligence is pretty much taking it over. And artificial intelligence is doing a lot of those things that organization, that you as a professional was taking it for granted, right? This is going to change a lot. It is going to change at a very faster pace. I am going to show you something, what is the process and what do you have to do, so on and so forth, right? So let me quickly share my screen to show you some of the key aspects. Yusuf, have you given me access to on the other thing as well? Let me log in. And then Uzair, I will go through the training, the interview process as well, okay, with you. Teacher, I have a couple of other questions as well. Because as you know that I'm looking for a higher salary bracket. I've shortlisted 3 of the unique selling points, which I will explain them during the interview. So one of them is that I'll explain them that I will integrate the security solutions in the company. So I just want to have your thoughts on that as well. I'm going to tell you because you're going to meet the CISO. When you meet the CISO, what do you have to tell them, right? And this is going to be a combination of DevOps, SysOps, big data, data science, AI, right? So these are the 5 key verticals you have to explain to them because data science is impacting, everything. And I'm going to explain to you all of those things once we go in deeper, because the presentation I've created is for you. So if you want to present this to them, because this is the, I'll be able to get it. This is basically, we're talking about senior architect level, right? Yep. This is what the architects do in terms of designing strategy and all those kinds of things, because you start your journey in an organization working at technical levels, right? Analyst level, technical level. But as you climb up the ladder of the organization, then you go in and start strategizing things and whatnot, right? This session is live. You can join in the session and you can go to our stream, which is like right now available. You can register yourself with the stream. Stream.alnafi.com is the website name. You can see it here, stream.alnafi.com. Go here, register yourself. Then you'll be able to browse into the room, browse rooms. Whatever language you speak, you can select that. Trends in the job market for emerging technologies. You can come here and you can say salam, whatever you want to say, sabah al-khair, or whatever. And we'll be able to, then I will be able to pick it up and answer the question. Otherwise, you can also join in this session as well in terms of the Zoom session, and you can raise your hand and I'll be able to answer that as well, right?
As I said, the world around us is changing very, very fast, right? The professionals, whatever disciplines they are working in, they have to upgrade themselves, because if they don't, it will be very difficult for them to survive within the industry, because AI is transforming things at a much faster pace. The way that things are going to be accelerated in the next few years, it is going to be at a very high pace, right? What we offer at Anafe is basically a lot of diploma programs. These programs can be done by anyone. There are no prerequisites, right? And we are already in the process of becoming a university ourselves. Just today, we had a session with UK University. It comes in the top 40 universities in UK, and they were very excited to meet us. And soon they will be accepting our level 3, level 4, level 3 to level 7 diploma program holders, right? So at level 3, which is equivalent to A level in UK, issued to you by EduQual, this is Diploma in Cloud Cybersecurity, RQF level 3. You can take admission in any BSc level program around the world, right? We are already have started communicating with all the universities around the world to already make a bridge, a pathway easier for you to go in. There are no prerequisites for any of these things. When I say no prerequisites, it doesn't matter what your background is. It doesn't matter if you have education or not. As long as you can join online and you can study, we will offer you these courses in English, but also in your native language as well. So whatever language you speak, Mandarin, Chinese, if you go to our website right now, you will see anafe.com. All of these courses are available in pretty much all the top languages that are spoken around the world, right? So if you look at level 3 diploma, level 4 diplomas, like if you go here, you can see that it is offered in 17 plus languages: Urdu, English, Chinese, Spanish, Arabic, Malay, Hindi, Indonesian, Bangla. So you can buy this course in any of these languages. You can study. And once you have prepared yourself, we are also training, teaching you English as well. So you can train yourself and equip yourself with the English language, pass the exam, and go abroad, right? For the professionals, whether they are in Middle East or wherever they are, in India or any of these countries, China, wherever they are, the only way for them to be successful is to find a pathway towards G20 nations, right? Specifically, if I have to say North America and European countries, because this is where the growth is. This is where the jobs are right now. And if you have 1 hour a day, we tell you to study level 3 diploma. If you have 2 hours a day, on weekends, on weekdays. So if I'm saying on weekdays, spend 1 hour a day, then on weekends, you have to do double the time, right? Multiply that by 2. If you have 2 hours a day, then you can study level 4 diploma. If you have 3 hours a day, you can study level 5 diploma. Because the more higher you go, the more time you have to invest in terms of studying, right? But then again, level 4 diploma means you can get 1 year of exemption in a BSc program in UK, right? Or around the world. If you do level 5, then it's 2 years of exemption. If you do level 6, that's like your whole bachelor's is exempted and you can take admission and master's. If you do level 7 certificate, not the diploma, because these are all diplomas. This is certificate in DevOps or SysOps, AI and Big Data, whatever. It's a combined one, right? Then you get 3 months of exemption. But if you do postgraduate level diploma, which is diploma in, we call this NE5 combos, right? Then you get exemption from all the things except the dissertation, right? Now, people are there who are studying level 3, level 4, 5, 6, 7. And this is what opened doors for you. So as I said, depending on the time that you have, depending on how much time you can invest, so on and so forth, that can dictate which pathway you should select, right? Because that will tell you which way you should go. For any profession, whether they are from marketing or business or accounting
or any of these professionals are studying, one thing is for sure. There are certain things that you need to learn in the first phase of your life. And then there's a second phase. The first phase is like, you can complete this first phase in 1 to 2 years. And the second phase is you can complete that in this third, second to third year or fourth year or whatever, right? So that's how it goes. The first phase is, as I said, whatever you have done, whatever is your background, you've done your bachelor's, your master's, you're in Japan, China, whatever country you're in the G20 nations or outside of G20 countries, outside of European Union, inside the European Union, wherever you are. The jobs are available in G20 countries only right now. These jobs can be secured both locally and virtually as well. So you can do both of them, right? Virtually means you can work from home and you can work for these companies. And locally means, globally means you have to leave your country and you have to migrate towards these countries, right? So we do offer that student visa consulting as well to ensure that you're fully prepared and fully equipped with all the knowledge, right? One of the things that you have to understand is that, as I said, phase 1 and phase 2. What is phase 1? Phase 1 is whatever your background is, whatever you have studied, it doesn't matter. Jobs, you have to study where the jobs are. If you study business or accountancy or finance, you won't find any jobs. Very, very difficult. The reason is wherever you go, you will find big data, AI. Now, it is good to understand the business model. Yes, you should learn, business or accountancy or finance, but you have to infuse your studies or engineering or whatever discipline you're doing. You have to infuse the first 5 things. Depending on your financial circumstances, whatever you want to go for. If you can't afford anything with the minimum investment, you should do cloud security or cloud diploma, right? But that's the base that you should do. But if you can afford something, $1,000 or whatever, right, that should be invested in DevOps. Second thing is SysOps. Third is big data. Fourth is AI, right? Fifth is you can select blockchain, you can select DevSecOps, you can select whatever. This is known as Smart Ops combined. Smart Ops is the next evolution of information systems. AI is changing everything. AI is changing software development. AI is changing big data. AI relies on big data and machine learning and data science, right? It relies on that. It's one of the fundamental tools that AI uses. However, wherever you go, all that data is being digitized. So you will see a lot of these things going in, right? So if you really want to be successful as a professional in whatever discipline you are studying, the only source of income for you is either working remotely for these companies, and you can do so with 3 to 6 months of preparation, or you do that on the other way around, which is basically going to these countries on student visa and then securing your job and then settling it down, right? So these are the 2 options that you have. Many of these countries are offering multiple pathways for students, right? We are providing you that consultancy as well. We are doing that. Today's interview, so this was like a high-level presentation of what professionals should do in terms of making sure that they are ready for the next wave of innovation and I would say disruption that is going to disrupt the whole industry. Already AI has gobbled up, and it will gobble in the next 3 years, 300 million jobs. They will be gone. Because of AI, you don't need people to write your resumes. Because of AI, you don't need anyone to design, graphic designing for you. It's already there. You don't need anyone as video editors, like hi-fi video editors. You can just get a simple video editor and he can do those things for you. You don't need top programmers, because even if you have an internee or a basic programmer, they can do some stuff for you. So there's a lot of disruption, and the list goes on, right? Digital marketing, all of these things are digitized right now, and the whole landscape of the business is changing. So one of the things you have to do is upgrade yourself, upskill yourself, because by upskilling, you will be able to embrace the new technology much better,
and you will be able to sustain yourself for the next 25, 30 years. What happens in the next 30 years, no one knows, right? But for the AI to become sentient, where it manages the businesses for you, it's not there. Will it happen? No one knows. Will it be allowed to happen? There will be a lot of regulation coming in, right? A lot of regulations will come in because you can't just rely everything on AI. Because if you leave AI to decide the fate of the humanity, AI will and potentially can wipe out the humanity, right? It has that capability. People can use it for nefarious reasons, whatever their nefarious reasons are, right? So we have to be very careful. But already there's a lot of debate going on in all of these aspects. But is it going to impact your things right now? No. But for now, many of these aspects will be impacted, like the blue collar jobs will be impacted, flipping burgers, stuff like that. Like people who rely in the States, all of these jobs will go away, will disappear because of the innovation in AI. And this is going to impact significantly the whole world, right, as we go in. But there will be some other things coming up as well. As World Economic Forum said, it is going to eliminate around 87 million jobs on an annual basis, but it is also going to create 100 million jobs on an annual basis because the workforce needs to be modernized to be able to manage the AI, right? And that's where you have to go in and reskill yourself. This reskilling can take 6 months, minimum 3, maximum 9 months. In 3 to 9 months' time, you can go into the market and you can still earn 6-figure salary if you are there, right? So that's what you have to do. So this was today's topic. I'm going to jump in now and prepare yourself, for my students, like an interview preparation. So you can go on our website. You can check the accreditation section, right, of the website. This is certified and accredited by EduQual. We have achieved that EduQual accreditation. There's a new announcement coming in. This is also signed and approved. So we will be launching that as well. And then the OFS is the big thing that we are working on right now. And there are certain other things as well that we are working on right now as well, right? This opens door for you wherever you are, whatever country you are in. You can now go to European countries to work and study and work both at the same time as well, right? So study now, be ready so that you can manage these things, right? I'm going to jump in right now and open this presentation that I have. So Uzair, tomorrow is your interview, right? Yes, Mr. Bhai. So what have you studied? What have you completed? You were studying DevOps and SysOps, right? Yep. Okay, Haris is here. Haris, this is for you as well. So when you go in for your interview preparation for your next job, and you go in and you apply as a security architect or something like that, your new resume is still being worked on. And Uzair, the same thing applies to you as well. I'm not sure what resume you created for yourself. You should show it to me so that I can see, because apparently you are still getting some good jobs, interviews right now. Bismillah. So for businesses to survive, they need these things as mandatory. Some of these things are mandatory. When I say mandatory, that means it's mandatory for them in order to work and be successful. And some of these things are, they become bread and butter for any business, right? They become the bread and butter for any business. So wherever you are, whatever you're doing, you need to comply with these regulations, right? So this is a plan, 100-day plan and beyond, right? You can, whenever you're going for an interview and they ask you, what will you do in your first 30, 60, and 90 days? This is one of the questions that they normally ask, basically, security architects, right? They will ask you, what would you do differently to make sure that, you meet all these key requirements as a business for us, right? So what is the answer for that, right? So let's talk about that. For any business, these are some of the things that they have to comply with. So I'm going to mention that, right? And because this is very important, that tells you one of the key things that you as a business have to follow, right? Give me 1 minute. Businesses, data science is a tool. Machine learning is a tool.
AI is again a tool. They don't manage the business. People manage the business. Processes manage the business. AI can help you refine the process. Big data can help you, define the process. Machine learning can help you adapt the process, right? But when it comes to implementing the process, when it comes to making sure that everyone is following the process, that's the people's job, right? So you have to go in, meet the people, and build up these alliances that they have to follow this process. They have to comply with these things. So if you have done your degree in data science or accountancy or marketing or international business or whatever you have done, or engineering, cybersecurity, offensive security, SCADA, automation, whatever sector you go in, there are certain things you will find that will always be relevant to that sector. And those are regulations. Regulations will always be there, right? No one teaches you the regulations because 99% of the time in the university where you're going in, the teachers, they have zero experience in terms of working within the industry. What sets Nafe apart from other people is we are giving you the insight of what happens within the industry. So that when you graduate and you go in there, because with our degree programs, we train you and we equip you with all the key things. So when you go in and you say, I've done my diploma or this or that, you will be fully prepared in terms of making sure that you can go in and you can work in that industry because you already know the process. For example, DevOps, SysOps, and AI. This is known as AI ops, right? And AI advancement track or whatever the case is, right? So if you study these tracks, you will see, or whatever the case is, you will see one of the key things is that we offer you is basically full access to courses on yearly basis, challenging quizzes, resume development, interview preparation, hands-on internship experience, learning paths, 5,000 plus labs. Depending on which track you have registered, you'll be given access to those tracks, to those labs, practice exams, cloud playground, access to on-demand servers on real production environment. No one gives you that, no one. So you don't know what is happening, right? Access to specialized containers to perform labs. That's another thing that, we are launching. So it's ready, it's already going there. And then for academia, for organizations, we are doing all of those things, right? So these are the key things. So whenever you go in the business, there are certain regulations you have to follow. Now there is a long list of regulations. Today I'm only talking about these from the perspective of data science, big data, AI, and cybersecurity, right? So when we talk about these things, then we have to comply with these regulations. Now, some of these are relevant in a way that every business in the world, which is at an enterprise level, needs to follow. So Uzair, when you go in and you say, if they ask you, what would you do differently? What is your vision for us, for the Australian market? You can tell them, my vision is by setting a gold standard within the Australian market, where our customers, if they need cybersecurity, they have ISO 27001 certified. If they need ITIL operations, every business in the world, when I say every business, every medium to enterprise level company must follow. It is mandatory, must follow, this control, which is ITIL 20,000. ITIL or ISO 20,000. It's a must. You won't find any business in the world, any business which doesn't have change management, process management, knowledge management, all these kinds of processes in place. And if you find a business that they don't have it, they will either be small companies or they will be irrelevant companies, because every business needs to have that. So the ITIL operations, right? Every business, pretty much like 90% of the businesses, they are either already on the cloud or are using the cloud with a combination of hybrid, some cloud, some internal data center. For that, you need the CSA star cloud security, which is known as the ISO 20, or there's also another standard, ISO 27017 and 27018.
for cloud security and cloud privacy, right? And again, any business who's using cloud or utilizing cloud where customer data is being impacted or is being secured or whatever the case is, sensitive data as per the organization, confidentiality level or classification level, they have to comply with that. Every business in the world which is selling a service, any kind of service, accountancy, finance, banking, telecommunication, electric companies, any service sector, right? Pay attention, any service sector, they have to comply with SAS 70 SOC reports. There's SOC 1, SOC 2, SOC 3, there are different levels, right? And this is point in time attestation, right? Now, this is predominantly in North America, but accounting companies, and there are different accounting companies which offer these services, right? So they have to comply with these things, right? So they PwC, Deloitte, KPMG, all these companies, they offer these things. Any company which is processing, storing, or transferring credit card data, they have to comply with PCI DSS. Any company. It can be a retail merchant, it can be a payment processor, or whatever the case is, right? Or even for banks, they have to comply with this. PCI DSS is one of them. Not primarily banks. Banks have other regulations to comply with, but they do comply with other PADSs and some of these other things if they're selling these services. Lastly, ISO 22301. Any business in the world, and I'm using the word any, which means everything, any business in the world, which is a big business, and they have to comply with certain things, they need to have a business continuity planning and disaster recovery planning, BCP and DRP. What happens if there is an electrical grid, right? And there is a storm and it impacted their power stations or their grids, and there's a shutdown and customers are impacted. What is their BCP, business continuity planning, disaster recovery planning? So you see, when you go to the, this applies on banking, every service sector, every governmental organization, every healthcare organization, every single sector in the world needs to comply with 22301 because they need to have some kind of BCP and DRP in place. Business continuity planning and disaster recovery plan. BCP means you have to continue providing your services in the event of a disaster. And DRP means disaster recovery planning. If there's a disaster, we have to continue providing services somehow, but we have to recover from the disaster as well so that we can resume ourselves to 100%. So these are the 6 key elements that if you're a data science, if you're in business, whatever degree you have done, you have to go, when you go into the job market and apply for jobs, this is where the jobs are, right? So give me 1 minute, please. If you can just give me 1 minute. So as I was saying, excuse me, as I was saying, these are the 6 regulations that pretty much every business needs to comply with. So if you have done data science, if you are a software developer, if you're in accountancy, you're finance, you're in marketing, you will touch upon these things one way or the other. And that's where the jobs are. So AI is consuming the jobs, but AI is facilitating these jobs right now. And it will keep on doing that for the next 20, 30, 40 years because automating these jobs is not easy. And when I say automation, you can automate these jobs, but you can't allow AI to take over the jobs. No, that's not happening because there's a lot of complexity in there. There's a lot of other things in there as well, right? And this is known as AI ops. So when you go, Uzair, and you ask them that, for their interview, what would you do differently? You will tell them, my vision is to, and this is a consulting organization, is to create a framework. And I'm going to show you the framework. This is the next slide is the framework, is to create a framework which creates
different, possibilities for basically our customers, where we can offer them these services, right? And one of the key things that I would like to invest time is to devise a framework through which organizations can work on 27001, ITIL, cloud security, SOC attestation. And for that, if you don't have any accountants, we can work with some local CPA firms to establish something like that, where we do the audits, they sign the sheets, or we collaboratively can do that. PCI DSS consulting. Everywhere you go, you will find digital money. What is digital money? It's credit cards, right? And when it comes to, like, this is the most commonly available, right? And the digital money is, wherever there is digital money, there's PCI DSS, right? And then ISO 22301 is for business continuity and disaster recovery. And where does the business continuity and disaster recovery happens? Everything is in the cloud. The reason that organization goes towards the cloud is everything stays in the cloud. And if anything happens within the cloud, they have a secondary cloud provider, right? So there's a lot of, one of the reasons that organization, so for example, if they have a data center or two data centers and they are 100 miles apart, if there's a, for example, there's a lot of things that they have to look into. If the data center is on a tectonic plate or whatever the case is, right? And there are other things that we have to consider when we're doing risk assessments. I'm not going to go into that details right now, but this will help you, establish. One of the key things is to ensure that we as an organization are able to create processes where businesses can recover fast, right? In today's architecture, everything runs on Kubernetes, pretty much all the application. And this is serverless architecture. There are no servers. Applications are running serverless, right? In different parts. And if there is more demand, then there is a horizontal, and then there is vertical scaling. Horizontal means there's more demand, more customers are accessing your website or your business services. They will keep on creating more applications. You don't have to do anything. It's zero provisioning. It requires more consumption of power, vertical, scaling. It will keep on giving it more RAM, more CPU, et cetera, right? So it's horizontal and vertical scaling. You see that? So this is what it does. All of these things requires planning. This is what security architects do. So the reason that you're studying DevOps and SysOps infused with AI, right? And that's what you do. And this is where AI comes in, and it makes the decision-making process easier, right? And that's what you have to do. So, and all of these things can be done through a unified risk management framework. The unified risk management framework is basically a framework that allows you to create basically a set of processes through which you can measure the business, measure your service, right? And it creates a way where you're strategically focusing on your business. Now, this is a cyber defense class. There's a new track coming in, cyber defense advancement track. And that is where we teach this thing. But I'm just telling you right now, because there's a new track which is coming. Big data is also being launched right now as well. So CDAT is a new, basically, it's a new, track that we are offering. You can study this by, recommended that they are studying DevOps, SysOps, and advancement track and CAT. This is where we teach you how to perform, threat assessments and remediation, TARA, for automotive industry, UIMS framework deployment. This is what I'm showing it to you right now. UK and EU banking and financial industry, complete assessment, US banking regulations, all of these things, right? This is all covered here. And then the deep dive exercises, right? And then there are some cloud labs as well, right? Just give me 1 minute, please, if you can. Bob, I need to miss. Sorry about that. So this is what needs to be covered, right? Now, today, I'm only giving you a glimpse of what the Unified Integrated Management System, the UIMS, or the Unified Compliance Framework really is, right? And this is where we're teaching you all the key things. So when you go in, Uzair, you have to tell them, if given the opportunity,
I'm going to reorganize some of the things, and I'm going to recommend some of the things. But obviously, I need the first 30 days, I need to understand what kind of services you guys are offering. What are you offering? What are you doing within the organization? How can we add value? So once I know the service offering and what revenue it is generating roughly, what are the best services, what are the least services sold, et cetera, then my role would be to create a unified integrated management system. And through this system, we can sell it to our customers, where it not only complies with all the cybersecurity regulations, the data science regulations, not the regulation data science, but data science aspects, the machine learning aspects, the AI aspects, all of these things under one umbrella. That is the UIMS, right? The Unified Integrated Management System. And it starts with focusing on the strategic focus of our customers, because this interview preparation is only towards a consulting. So if you're going to PwC or Deloitte or KPMG or EY or any of these companies, IBM, or any of these, Booz Allen Hamilton or, Boston Green Group or any of these companies, this is how you have to approach them. Accenture or whatever, right? I worked with almost all of these companies in the past. So this is what you have to do. You should say strategic focus is our priority of our customers. Decision enabling governance is our priority as a service. Active quality management. What kind of controls do we have for quality management purposes? The delivery of products and services. Then it comes down to manage risk and opportunities. We have to manage the risk and the opportunities both, as per our organization risk appetite, as per the organization, as per our clients' risk appetite, right? Then it comes integrated suppliers, the biggest problem organizations have, right? They don't have any vendor management framework. And this is where you support effective vendor management by defining and rigorously measuring contractual obligations. Whether we are consuming services from the cloud or from anyone, we need to have integrated suppliers, right? And the other thing is how to create high performance teams internally within our organization as a consulting organization, and also enabling our customers as well, right? And then number 7 is agile change control. As I said, every organization in the world requires ISO 20000 or ITIL operations, change control, management, problem management, basically incident management, issues management, knowledge management, and the list goes on. Financial management. There's a long list. ITIL operations are required for any company on the face of the earth, which is working from medium to enterprise level. I'm not talking about mom and pop shops. No, I'm talking about bigger organizations, right? Any organization with 100 people or above, they need to have this. Otherwise, they will fail. Even the smaller organization nowadays, they have some kind of ticketing system or something through which they can manage the processes. Even if when you reach an organization of 50 people, 25 people, you need something in place. There's Jira, there's so many other tools available right now. Zamed, ITOP, so many, security metrics. There's so many other things which are available right now that you can apply. The other thing is operational sustainment, position management for a greater consistency and in the delivery of service. This is the service delivery model. This is what I used to sell. This is what I created for PwC. I'm giving it to you. Go and start selling it off, embedded within your organization. This is what I did. This is the framework that allowed me to be successful and become a CISO at a very young age. This is the secret that you have to follow. So build up your technical skills and learn this, and then sky is your limit. But you have to go through the journey, right? So you need to learn SysOps. Cloud security is in the middle. You need to learn SysOps. DevOps, SysOps advancement track is what we are offering. DevOps. Then we go to all the other aspects and keep on going, right? AI, big data, and then you can choose blockchain, you can choose software development, you can choose any of these other things that we are offering, right? Or whatever you want to study, that's what you have to study. No one is going to teach you
how to talk like this within the organization. We are doing that. This is what sets apart, this is what differentiate between boys and men, right? So if you really want to join the men's club, this is the men's club. This might allow you to grow some chest hair on your chest, right? But that's what we teach. And then the wheel goes on. It continues. And that's what you have to present it to them. Depending on what they ask you, tell them, as my first role, I have a vision that I would like to see for the organization. And if you prepare this and memorize these things that I've told you, and we are already teaching you all of these things in our courses, right? Through hands-on experiences and labs and all of those things, that will help you pass and go for it, wherever you want to go, right? The next thing is developing the plan. Now, this is a very good ISMS model, the same model we advocate to deploy, when it comes to cybersecurity and embedded with data science and AI and DevOps. That's what you have to follow. And you can go through it, how it goes in, how the wheel rotates, so on and so forth. This is known as Plan, Do, Check, Act, the PDCA cycle, Plan, Do, Check, Act, right? So you can go through this thing when an organization, when we have to implement ISMS, we go towards security policies. We start with security policies. We organize the information security principles. We do the asset management. We do the access management. Then we jump onto communication security policies, physical and environmental policies, operation security. We need to check on all the operational clouds and everything. Cryptography, what kind of controls and standards we are following. Supplier relationship management is there. System acquisition, this is software development, DevOps, and SysOps combined. Information security aspects of business continuity management. This is what the BCP and DRP is. The ISO 22301, the information security management, this is incident management, and then human resource security. And then it keeps on moving. The circle starts again. Compliant, we are compliant, then it goes back again. And that's what you have to follow. This is extremely important for anyone going out for an interview. And that's how you do it. How you do each and every step, we have already explained to you, right? One of the things that we keep on telling everyone is, if you do DevOps advancement track, you will be given access to cloud security track. Study it. Most of these things are covered there because it is known as cloud security, but we are covering pretty much each and every industry and vertical, from data science, from machine learning, from all aspects. So even if you do a degree in data science or machine learning or AI, you will find 0 jobs. I'm telling you right now, go and do it if you want to do it. Yes, absolutely, yes, go and do it. I'm not talking about exceptions where you can find a research position or something like that. No. When it comes to going into the industry and working, it's a separate ball game, right? Then you have to talk to them, Uzair, about some of the other things. It's basically, the role of integrated management system is how to integrate that within the departments. And this is where, whatever departments are, it can be other department, DC operations, center of excellence, other applicable services, other services, whatever they are, you set up a timeline. What is the timeline? The timeline looks like this. How am I going to achieve these specific objectives, right? Or our enterprise business units. EBU means business units. Wireline with wireless or whatever. If it's a retail sector, if it's a telco sector, that's how you do it. So you process maturity. How long will it take? So tell them, I will start in the first 30 days, I will do this. First 100 days, 90 days, I will initiate the 100-day plan assessment with respect to UIMS. So I will present a UIMS, get the buy-in, and start implementing that thing. And after performing the assessment, I will tell you the gaps, what are the gaps, and then how we have to build up an action plan and close these gaps, right? So on and so forth. And this can take from 1 year to 2 years' time from large organizations, right? One of the models over here is GRC tool implementation. Every organization needs a GRC tool, the governance, risk, and compliance tool. And this is, this is a model from ISO 31000, where you should, when you are creating a tool or implementing a tool, get the stakeholders, understand the stakeholder expectations, right? Understand the business needs,
understand the source of authority, the regulatory obligations, and the business pressures. These 6 verticals, 5 verticals, in whatever sector you go in, you will find these things. Whatever sector. They are general. There's direct, there's evaluate, there's monitor, there's performance and conformance, there's proposal and plans and strategy and policies, and manages and managing system for the use of IT, right? Every business nowadays relies on IT. You cannot outsource these processes. You need people to sit there. So if you have learned business, accountancy, finance, they are automating these jobs. People are losing these jobs, but they are working in terms of creating these things where you can work in these sectors, right? So that's what you have to focus on. I'm going to show you something, World Economic Forum. This is a very good report back in 2020. It came out in 2020. Don't fear AI. It will lead to long-term job growth. Yes, it will lead to long-term job growth if you have the skills. If you don't have the skills, it's all written here. They have been talking about this since 2020. I've been talking about this since 2018. And we are in 2023 right now, right? So AI is already here. It's already changing things, and it is accelerating things. It will create more jobs than it destroys. This is the most important aspect. It is going to create more jobs than it destroys because someone needs to manage these things. And this is a very, very good big picture, provided by them. But you need to understand the key aspects before you can even do anything. So these jobs will go away. Data entry clerks, administrative and executive secretaries, accounting, bookkeeping, payroll clerks, accountants and auditors, assembly and factory workers already replaced by robots. It's automation. Business services and administrative managers, all of these things will go away. These are the new jobs that you will see. So no matter what you have studied, there are no prerequisites to study these things. You don't need to be a mathematician to study AI, right? All you need to do is, if you have the time of 1 hour or 2 hours or 3 hours a day, and over weekends, you can invest 4, 5, 6 hours a day over weekends, you can secure yourself. If you don't, you will lose. You will be on the bottom of the barrel in terms of losing your jobs. Reskilling and upskilling. This is very important because organizations, providing tools and opportunities for employees to apply newly acquired AI skills to their day-to-day work, right? Identify new skills and roles needed as a result of AI. This is going to be the biggest problem organizations are having. Yes, there is ChatGPT. Yes, right? Yes, there is Bard. But if you don't know what question to ask, you will not get the right answer. So you need to have the right prompt to ask AI what needs to be done. And you have to be smart regarding that. And that's what the skill you need to learn in order to work much more effectively. Because right now, AI is at the position where it can give you solution as per your question. So if you ask something, which doesn't make any sense, it will give you an answer that doesn't make any sense, right? The world right now requires reskilling. Up to 50% of all employees will need reskilling by 2025. Safeguard yourself in terms of learning these things. Now, this is a very good, tool that they have created, the AI. These are all the businesses that are being impacted by AI. For what purpose it is being used, generative AI, AI in the future of jobs, entrepreneurship, fourth industrial revolution, future of work, all of these things, right? You can go through this and you can understand all the key aspects. But this is where the AI is all about, right? So I'm going to leave it here so that I can start taking some questions. So Uzair, I hope that you are clear. I'm going to send you these slides. Whatever you learned, you already learned a lot. I'm going to share 2 slides with you.
and then I'll ask you to, if you have any questions. Side effect, increase operation maturity. So you have to say, every maturity you can keep on increasing. So Yep. 16 where we are, 17 where we are, 20. So you can change the dates, right? Yep. And say for commodity service to as a service, X as a service. Elon Musk is creating an application known as X, Everything app. He calls it Everything app. It's X as a service. I came up with this term 2016, right? So this is what you have to do. The difference is what Elon Musk. I think I'm a guy with a beard. Elon Musk is a different person. But what I'm saying is like people in the industry, they think alike, right? The people who are the visionary ones. That was the reason that even with a big beard and a cap, I was able to excel within the organizations. But my limitation was, as a Muslim, I can't work in banking and financial sector. So because some of the things that they do is not allowed for us as Muslims, the interest-based payments and stuff like that. But what I'm saying is that this is where the revolution is going towards. So study this, harness this, and you will be successful in leaps and bounds. I'm going to take a pause here. So Faisal, I have a couple of questions as well. You can take the break. I'm going to take a pause here. So Yusuf, when to take out the video from here and then play it up in different languages later on, inshallah. Okay. Jazakallah khair. Yes, Uzair, go ahead. Fire it up your questions, whatever you have. Okay. So I was thinking to add 3 points as a unique selling points at the end of the interview. So one is this presentation. The other one I'm thinking is I can give a plan that I can integrate different security solutions and merge them together. So is it possible to do the integrations like SIEM with a Forescout or a SIEM solution like Splunk? Look, this is the unified integrated management system. What it does is, this is what known as smart ops. I showed you what smart ops was, right? Yep. So what you do is you collect all the data, you bring it into the SIEM, from firewalls, from switches, from routers, from applications, from business processes, wherever you are, you collect all the data, you bring it into the SIEM, right? Yep. And in the SIEM, this is just consider that as a syslog server. It's like a graveyard of logs. It's like a big grave where you just dig a big hole within the organization digitally, start dumping all the logs there, right? And these are just dead bodies. Just consider them as dead bodies, right? It's like they call it like the mass grave, right? So mass grave of logs. So you just keep on dropping the logs there, and then you use threat hunting and basically SOC analysis, the security operations center analysis, and also for business processes terms, you use smart ops, utilize AI on top of it to see and build up a profile picture of what is actually happening within the organization. What applications are about to break? Because anything that is about to break, it always throws out some error messages, right? Organization pick up these error messages very, very late. If anything is about to be compromised, they always give some kind of sign that something is about to happen, right? So they always do that. So think of it as like a glucometer within the organization. You keep on checking the sugar levels of the organization and use this terminology so that everyone understands. Because nowadays everyone has diabetes. Alhamdulillah, I don't, because my levels are always an ideal because I don't eat that much and I keep myself fit by doing a good regime. So, and eat healthy as well. So, but not everyone does that. So tell them it's like creating a process where we are checking the blood pressure of all the applications, the services, and the sugar level within the organization continuously to see where the damage is about to happen, because everything sends out alarms. So Forescout, whatever solutions you have from whatever providers, cloud providers, you can bring in all that data and you can apply AWS SageMaker or OpenAI or whatever, and give it itself some parameters. These are the parameters I'm looking for. It will start working towards it, and it will start harmonizing the data for you and start showing you the correlations. Yes, I mean, that's what you should do.
This is all about UIMS. This is what UIMS really does. It automate and gives you the visualization from one screen where you can see everything. But this takes time. This is the idea that these big four firms sell, and they make a lot of consulting money. So tell them, this is time, money-making machine for us, right? But we have to finalize the solutions. And every organization, as per their budgets, will utilize different products off the shelf. Introduce it to them. And incorporate these things. Okay. Now, because I've got it, and it's a very excellent point. That's what I was looking for. That was a kind of a answer I was looking for. Okay, so now, next question is, I'm looking for some security operations which can be implemented in a very advanced or very complex solutions which we can automate it. Can we automate the pen testing? Can we? I know that we can automate the vulnerability assessment, but I'm not sure about the pen testing, because in pen testing we have to exploit it as well. So just wanted, you can. There is no one single silver bullet through which you can say that if I have this, then I don't need anything else, right? There's a lot of werewolves out there, which are business threats, right? Consider all the threats as werewolves. So silver impacts these werewolves. So there's no single bullet. There's no silver bullet to take down all the werewolves. That's not going to happen. What happens is, within the organization, you recommend controls as per the business processes, right? You just don't say, take the solution and it will make you compliant. Khalas. No, you don't do that. Khalas, the Arabs, they say khalas, the Italian says capiche, right? So no, there is no capiche. I mean, you can't finish that. It's an evolving threat. It will keep on coming up. What you can do is you can automate some of the stuff. As per the regulations of PCI DSS and others, you can use automated scanning, but you also need to do manual penetration testing, right? That's a requirement. Once a year or after every major change within the network or applications, you need to perform web application pen testing, and you need to perform a network penetration testing. Now, the human will be using some tools, of course, right, to perform these things, but it needs to be a human. You can't just say, because the standard says do automated and manual testing, both, right? The difference is the automated testing, you just fire up the tool and just tool goes in, checks everything. The manual testing is where a person goes in, he uses the tool, but he uses a combination of different tools, right? And then he uses his own experience to find out the vulnerabilities. And that's what the requirements are. You can say, we can create a comprehensive smart ops solution, which is a combination of DevOps, SysOps, because wherever you go, you will find DevOps. Wherever you go, you will find SysOps. DevOps is development operations. SysOps is all the operations in the cloud and the data center, right? Then we have big data. Everything is spewing out big data. Then we have AI, right? Then we have other security, DevSecOps or blockchain or whatever technologies you guys want to use. Combine all of them, it becomes smart ops. So say we can provide a solution for smart ops, combine scripting, Python, Selenium, Bash, automation, like we can throw in all of those things. But at the end of the day, the human factor will always prevail, right? And they will always be there to check up on things and test and verify these things, right? You can automate the management of these things. You can minimize the staff in terms of managing these things, but the more complexity you add in for the automation will add in more complexity as well. It's not going to, it is going to minimize the human element, but it is going to create more complexities as well, right? Near my house, there is an Amazon data center, warehouse, just close to my house, just 10 minutes drive from my house. Huge pieces of land, and they have huge warehouses. In the parking lot, there are always 2 cars, nothing else. Those are the only 2 operators sitting in there. All the labor is gone because everything is there. There are robots in there, and they're open 24 hours. And those 2 guys, in the morning, there are 2 guys. In the night, there are 2 guys. So 4 guys altogether who are managing all of these things.
and they know DevOps, SysOps, robotics, automation, AI. That's what they do. That's what these things are. So SecOps, the SOC footprint will change. So if you have 10 people, you may need just 5 people, but those 5 people will have more skills. But the remaining 5, if they don't upgrade their skills, they will lose the job. But if they upgrade the skills, they might be able to find other avenues, because there will be more avenues, because AI will create more jobs as compared to what it is creating, what it is destroying, because AI will take over the simple jobs, the labor jobs, drivers, delivery guys, flipping burgers, they will go away. Then they don't need a lot of complexity. Reviewing logs become more complex because more systems will be creating more logs. Who's going to review the logs of AI? Someone needs to review AI. Is it behaving properly or not? There's so many other factors, right? AI regulations are already being designed right now to come up with AI. The day ChatGPT came out, it was hacked. It was spewing out all the credit card numbers. So the AI will require more regulations in terms of reviewing itself. So, is it secure or not? So on and so forth, right? So you can automate, yes, but through AI and other means, but it will add more complexity, and organization needs, same if not more staff to manage that complexity. Okay, all good. Thank you so much, Mr. Rai. Okay, so I wish you the best, inshallah. Praise Allah, ask Allah, Allah will help you in terms of passing the interview. I'm going to take some more questions here, and then we will wrap it up for the day. Yes, Muhammad on, go ahead. Assalamu alaikum, Faisal bhai. फैसल मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी कि जब आप किसी को एडवाइस करते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, तो आप इन जनरल एडवाइस कर रहे होते हैं या अपने एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में एडवाइस कर रहे होते हैं उसे? किसको? समझा नहीं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग? समझा नहीं क्या मतलब कि आप जब एडवाइस करते हो किसी को कि आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके अपना फीस बना लो, तो वो आप जनरल एडवाइस कर रहे होते हैं कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, या आप स्पेसिफिकली अपना अल-नाफे का एफिलिएट प्रोग्राम उनको एडवाइस कर रहे होते हो? क्योंकि मैं जब भी वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे दूसरों का नहीं पता कि क्या करते हैं दूसरे, ठीक है ना? दूसरे हलाल चीज बेच रहे हैं, हराम चीज बेच रहे हैं, आई डोंट नो, राइट? आई हैव नो व्हाट दैट इज, व्हाट दे डू, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? I'm very peculiar in terms of how you earn money and how you spend money, because these are the key questions जो अल्लाह आपसे पूछेगा, पैसे कैसे कमाए, कहाँ खर्च किए, right? तो उसमें मैं नहीं पढ़ता, I don't go there. वो तुम्हारा what I recommend is, जब मैं कोई recommend कर रहा हूँ, if the recommendation is coming from me, I have to be very sure कि मैं क्या recommendation दे रहा हूँ, because if I give the wrong recommendation, I'll be accountable, right? So जब मैं affiliate program को बोलता हूँ, I always talk about our own affiliate program, right? I don't talk about other affiliate programs. I don't know them. I don't know what they're doing, right? जी, I don't have the time to check them कि भाई ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते. तो इसी वजह से ना जब भी आप बोलते हैं तो मैं आपकी वेबसाइट पे विजिट करता हूँ और एफिलिएट का पेज ओपन करता हूँ, तो उसमें यही आता है कि it's not being launched yet. No, it is done because we upgraded the whole thing. ठीक है? It's already being used by some of the power users right now. कुछ लोग कर रहे हैं पीछे, जिनको हमने जो बहुत ज्यादा काम करते थे, हम उनको पहले लाके बिठा दिया उसमें. तो आपको I think before Eid we are launching it. तो soft launch उसकी हो जाएगी. You will be able to use it, start using it again. ठीक है ना? We had to change it. We added a lot of big data controls in there because लोग ने उसमें गलत काम शुरू कर दिए थे. Unfortunately लोगों ने उसमें fraud शुरू कर दिया था, leads के ऊपर, सब चीजों के ऊपर, purchases के ऊपर. So we had to create controls, and we have to throw in big data in there as well. So we have a solution known as Al-Basir. मुझे अल्लाह के नाम बहुत पसंद है, ठीक है? Al-Basir एक अल्लाह का नाम है. He sees everything. So हमने जो solution बनाई है, it sees everything. कौन क्या कर रहा है? So when you go into the system, it watches you. So मैंने इसका नाम रखो Al-Basir, because nothing can hide from this thing, right? So if they, और अगर उसके अंदर fraud controls built in है, if they want to do something, कोई गलत काम करेंगे, तो वो जो है ना हमें पता चल जाएगा. अनफॉर्चुनेटली बुरी बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतने काफिरों को नहीं पता कि फ्रॉड कैसे करना चाहिए. मुसलमान अल्लाह हमें हिदायत दे. बस अजीब सी बात है, लेकिन जो है ना सारे चोर वहां बैठे हुए हैं, सारे हुक्मरान चोर हैं.
खाने काबा के अंदर जो है ना बहुत सारे कीड़े फैल गए थे। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी और वो एक्चुअल वीडियो थी, कोई बंदा डॉक्टर था दोस्त, वो हज करने गया हुआ था, वो उम्रा करने, और उसने कहा भाई देखो ये क्या हो रहा है अभी यहाँ पर ना, कि नमाज भी नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा भाई अल्लाह इतना नाराज है कि अल्लाह कीड़े भेज रहा है मुझे, है ना। वो बिदाए व निहाय में लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि मस्जिद नबी और खाने काबा में एट द एंड ऑफ टाइम्स, ये एंड ऑफ टाइम्स है, कुत्ते घूमेंगे खाली, लोग छोड़ के चले जाएंगे, दिस इज द एंड ऑफ टाइम्स, ठीक है। मगर उससे पहले बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो शराब खाने खोल दिए उन्होंने, वहां पर सब गलत काम कर दिए, वो तो छोटी बात है। देखो ये सब बहुत छोटी छोटी बात है, शराब खाने खोल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। जो सबसे बड़ी तौहीन हम करते हैं ना मुसलमान, हम करते हैं कि हम कुरान फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। हम गाने सुनेंगे, हम फिल्में देखेंगे, हम नाच गाना करेंगे, क्रिकेट मैचेस खेलेंगे, और जब कुरान की आयत पढ़ेंगे तो नहीं करेंगे। हम यूट्यूब पे हराम पैसा कमाएंगे एडवर्ट्स दिखाकर, वो हराम है, सबको पता है। वो बोलेगा नहीं ये तो, जो मौलवी जो खुद बैठा होगा ना खुद फतवा देगा, नहीं नहीं हलाल है, आप इसको ना पैसा कमाओ और इसको ना 10% अपने पैसे का ना वहां दे दो, क्या नाम है, उसको जक़ात में दे दो या पता सदके में दे दो। अजीब बात कर रहे हो तुम, दिस इज वेरी अजीब, ठीक है। किसी ने मुझे बोला कि भाई मेरे पास आया फतवा लेने के लिए, सही है, तो मैं स्कॉलर बन रहा हूँ, बना नहीं, लेकिन इसको मैंने कहा भाई हराम हलाल के लिए कोई फतवा देने की तो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पता है कि क्या है हराम क्या है हलाल। ये कुरान बहुत आसान है, अल्लाह का करे, कुरान बहुत आसान है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तुम बैठ के तफसीर पढ़ो, ठीक है ना। मतलब उनके पास जाके सवाल पूछो, उनकी कुरान की तफसीर उठाओ, तुम पढ़ो, सामने ने लिख दिया सब कुछ। तुम्हें सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज पढ़नी है सईद कुतुब की तफसीर पढ़ो, तुम्हें सब आंखें तुम्हारी खुल जाएंगी क्या हो रहा है, ये कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा तुम सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ो, अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं, तुम्हें पता है हराम क्या है हलाल क्या है, तुम सब मालूम, ठीक है। तुम कोई बब्बू थोड़ी हो, नन्हे काके थोड़ी कि तुम्हें नहीं पता, लोगों को सब पता है। लेकिन लोग उसमें ना, मेरे पास एक बंदा आया कहता है कि ना मैं इंटरेस्ट कमाता हूँ। मैंने कहा अच्छा बहुत जबरदस्त काम करते हो, बेहतरीन यार जबरदस्त। कह रहे हाँ, और मैं जो है ना उसमें से 25% जो है ना वो मैं सदका कर देता हूँ। मैंने कहा यार बेहतरीन जबरदस्त क्या बात है तुम्हारी। तो मैंने कहा, मैंने उसको, तो उसने कहा कि आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा यार देखो ये काम तुम ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना शफात के लिए, और तुम उनको बताना कि तुम ये काम करते हो, तुमसे पूछेंगे कि तुमने क्या काम किया, तुम शफात ऐसे तो नहीं मिलेगी ना। तो अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि यार तुम जो है ना यहूदियों की तरह हम भी सूद खाओ, मुसलमान सब सूद खाएं, और जो है ना सूद दें और सूद खाएं और सब कुछ करें। और वो ये भी नहीं बोलते कि रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों दोज़खी हैं, वो बोलते यार रिश्वत लेने वाला देने वाला सब जन्नती हैं, तुम रिश्वत ले रहे हो तो आधी तुम इधर दे दो आधी उधर दे दो, वो ये बोल देते। तो यार तुम उनके जाके तुम उनको जवाब देना। तो ना नहीं नहीं, तो वो खामोश हो गया बंदा बिल्कुल। मैंने कहा हाँ, तो वो तुमसे पूछेंगे तुम शिफात लेना है, वो तुम बोलेंगे शिफात किस बात की, किस बात की शिफात, दफा हो जाना से। मैंने कहा ही विल से इट टू यू, आई एम टेलिंग यू राइट, इट्स नॉट मी। मैंने कहा उनकी हदीस पढ़ो। मैंने कहा वो जो है ना हम सिर्फ फेंक देते हैं। हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो, हम रमजान में टीवी खोलो, मेरे वालिदैन के कमरे में टीवी है, उसमें क्या आ रहा होता है, वो ना क्या नाम है, रमजान में गेम शोज आ रहे हैं ना, मतलब जी। मैंने कहा यार अल्लाह अकबर, मतलब कि उम्मत जो है ना, अगर आज सहाबा जिंदा होते तो हम बोलते हैं कि यार ये तो सिसीस का मुसलमान है, यानी कि बिल्कुल लूसी मुसलमान नहीं होते, तुमने क्या मुसलमान, ये इस्लाम है, दिस इज नॉट इस्लाम, ठीक है ना। तो आजकल के टीवी के ऊपर लोग बैठकर और यूट्यूब पे बैठ के ना लोग इस तरह से पैसे कमाते हैं। क्या बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बड़ी पते की बात बताता हूँ फलाना फलाना, और वो गलत काम कर रहे हो तुम, क्या पते की बात बता रहे हो। और नीचे लोग मैसेज करेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मेंटोर है, क्या फलाना है, क्या ये क्या वो है, ओ जी क्या आपसे स्कॉलर ने क्या बात कर दी, बस वो यही बस, ठीक है। तो अल्लाह करे हम फिर बस दिस इज द अब प्रॉब्लम। दुआ ही कर सकते हैं। देखें अब सारे डिसेप्शन के दौर में रह रहे हैं, अल्लाह हमें हिदायत दे। इल्म की बहुत बिग कमी है प्रॉब्लम, हमें। देखो तुम लोगों को ना लड़ना पड़ेगा, जी जी। तुम लोग को अच्छा लड़ना पड़ेगा, तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि भाई गलत है। और ना जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे ना, अल्लाह ताला ने कौम शोएब अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना। सिर्फ 9 लोगों ने गलत काम किया, अलमला 9 लोग थे, 9, ठीक है ना, 9 लोग, एक ने ऊँटनी को गिराया, बाकी सबने मारा ना, सबने प्लानिंग की, 9 लोग थे। अल्लाह ताला ने तमाम को तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों किया तबाह बर्बाद, पढ़ा उसके ऊपर कभी, पढ़ा क़ससुल अंबिया पढ़ो। कुरान इज 50% स्टोरीज ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड 50% अहकाम शरीय अहकाम, ठीक है बस। कुरान में ये कुछ भी नहीं है। और दिस इज स्टोरी, दिस इज अ बुक which has all the things that will happen that happened in the past, present and future, and then there are 500 ahkamats, roughly 50% ahkamat है, काफी सारे ahkamat हैं, ठीक है, सब चीजों के ऊपर, शादी ये वो सब चीजों के अहकाम, बाकी जो है ना हम फिर
उसके ऊपर छोड़ दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने सब बता दिया हमको काफ़ी हद तक, और जो चीज़ नहीं मिलती है फिर हम उसके ऊपर शरई उसमें हम फ़िक़ही उसमें देख लेते हैं। बट द थिंग इज़ कि सब बता दिया ना, नो वन फॉलोज़ इट। तो शुएब अलैहिस्सलाम को हम क्यों बर्बाद किया? क्योंकि वो सब साइलेंट मेजॉरिटी बन गए। सो द उम्मा राइट नाउ इज साइलेंट मेजॉरिटी, ठीक है ना, उम्मा इज राइट नाउ साइलेंट मेजॉरिटी। तो डोंट बी सरप्राइज कि तुम्हें नजर आए मस्जिद अल अक्सा मिट्टी कर दी, ठीक है ना, खाने काबा को खत्म कर दिया। इट कैन हैपन, इट कैन हैपन। विल इट हैपन? I suspect yes, because Allah will destroy us and Allah will create a new ummah, and Allah will ask them to do His work, His and His noble Messenger sallallahu alaihi wasallam work, because हमने किया ही नहीं. That is the problem. अल्लाह रहम करे हम पर। मैं इसलिए मैं अ, कहता नहीं भाई, तो जो है ना, मैं अपने उसके ऊपर कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत कहूंगा तो उसमें मैं अकाउंटेबल भी हूँ। जज़ाकल्लाह फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। तो फैसल भाई एक और जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं लोग, अगर वो डेवॉप्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम और अजाइल डेवलपमेंट की नॉलेज होना कितना ज़रूरी है? कुछ भी नहीं आपके है, कुछ भी नहीं, तुम सब तुम्हें पढ़ा दिया गया, सब कुछ सिखा दिया गया। दूध वाले का बच्चा जो है ना यूएई चला जी गया, जी तुम्हें पता है? जो दूध वाले का बच्चा था ना, वो जी जी यूएई, जी ठीक है ना, उसका कोई ठीक है बैकग्राउंड नहीं था, उसका फाइनेंस का बैकग्राउंड। उसके ठीक बाप ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा पढ़ू के उसको बीबीए करवाया, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, 2 साल से बाप की दुकान में बैठ के दूध बेच रहा था, ठीक है, ठीक हमारे ठीक पास आया, पढ़ के निकल गया, बस खत्म। तो ठीक तुम भाई, तुम कोई रिक्वायरमेंट नहीं, देखो तुम ये कहो मुझसे कि यार जन्नत में जाने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ बैठे हैं, आप ना मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बैठे हैं, बहुत बड़ी फिल्म है मौलाना तारिक जमील साहब, ठीक है ना, रोना बड़ा जबरदस्त आता है, ठीक है, जब सच बोलने की बारी आती है तो सब खामोश हो जाते हैं, सब सब ये सब भाई, मैं बहुत इस मामले में मैं बहुत लड़ा हूँ इन सबसे, ठीक है ना, ठीक है। तो हालांकि मुफ्ती तकी साहब खुद शागिर्द हूँ, मुफ्ती तकी साहब से मुझे बड़ा इख्तलाफ है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर वो मेरा अपने इल्मी इख्तलाफ एक अलग चीज़ है, हम लोग इख्तलाफ नहीं करो उसके ऊपर, ठीक है, वो बड़े अच्छे आदमी है, ठीक है ना, लेकिन मेरा इल्मी इख्तलाफ बहुत लेवल का है, वो अलग है, ठीक है। बट द पॉइंट आई एम स्टेटिंग इज के जो है ना, वो तुम्हें बोलें कि तुम्हें ये करना है, करोगे तो फिर जाओगे नहीं, गलत है ना। यू कैन गो टू जन्नत, कुछ नहीं करोगे यहाँ पर होगे सबसे लोअर लेवल पे, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 अल्टीमेट है, ठीक है ना, उसके ऊपर अल वसीला है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहां तो कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं सिवाय उनके, ठीक है ना, वो जिसको लेके जाए, हम मिलने के लिए जा सकते हैं, उस चक्कर में अंदर घुस के बैठ के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है अंदर, इंशाल्लाह। ठीक है ना। बट वो हमें इजाजत होगी, हम जा सकते हैं, उस चक्कर में बड़े लोग जाएंगे आगे पीछे, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन 7th लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत है ना, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन गो देयर इज बिल्कुल नथिंग एल्स दैट यू हैव टू डू। जी बिलाल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी के पास 2 इयर्स की एसोसिएट डिग्री हो कंप्यूटर साइंस की विच इज़ इक्वलेंट टू 2 इयर्स बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो उसके बाद वो अल्लाफे से कोई एक कोई भी ट्रैक करे तो उसका क्या बीएस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं यार देखो, हम तुम्हें तुम्हें इक्वलेंसी करवानी पड़ेगी, हम तो यूके का पढ़ा रहे हैं ना, तो यूके की गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया, उसको मानते हैं। अब अगर हमारे कोई लेवल 5 करता है तो उसको 2 साल का मानते हैं, लेवल 6 करता है तो उसको 3 साल का बैचलर्स पूरा मान लेते हैं। तुमने जहाँ पाकिस्तान से पढ़ा तुम उसकी इक्वलेंसी करवाओगे, वो हम नहीं करवा सकते। सर तो अगर मैंने तुम्हारे विजुअल पास से बोला, पढ़ा। तुम यूके नैरिक पे जाओगे, बोलोगे मैंने यूके नैरिक जो है ना, मैंने यहाँ से ये पढ़ा है, मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकता जब तक तुम्हें यूके नैरिक से तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। लाइक सर मेरी एसोसिएट डिग्री विच यूनिवर्सिटी है तो मैं इक्वलेंसी कैसे करवाऊंगा? मैं यूके नैरिक से जाके बात करो, मुझसे क्या पूछो, ठीक है। यूके, मैं तुम मेरे पास आओगे, मैं बोलूंगा यूके नैरिक से अपनी ना इक्वलेंसी निकलवा के लाओ, वो तुमको बताएंगे कैसे करना, वो मेरा काम नहीं। अगर तुम मेरे पास वो पढ़ते हो, डिप्लोमा पढ़ते हो और उसका एग्जाम पास करते हो, तो वो तुम्हें यूके की गवर्नमेंट ही दे रही है, तो यूके नैरिक तो हट गया ना, साइड पे हो गया, बोलेगा मैं क्या करूँ, तो तुम यूके का ही कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो हर जगह एक्सेप्टेड है। पाकिस्तान में जो जो तुमने पढ़ा है वो मुझे नहीं मालूम। अगर तुमने बैचलर्स किया है तो मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो, बैचलर्स भी फिर हम देखेंगे तुमने कहाँ से किया है, HEC से अप्रूव्ड है, फलाना फलाना ये वो, ठीक है, सब कुछ, और फिर तुम्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ ये चीज़ है। तो डिप्लोमा प्रोग्राम करना जरूरी है, ठीक है। हमने अपने सिस्टम बनाया इस तरह से कि ताकि तुम्हें जॉब मिले वहाँ पर, ये नहीं कि तुम बस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 6 लाख लोगों के पास PSW मिला है, ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं यूके में। क्यों फिर रहे हैं मारे मारे? यूनिवर्सिटीज ने पढ़ा दिया। सुबह मेरी जिस ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत हो रही थी, मैंने कहा तुम लोगों ने पढ़ा दिया, जहाँ पढ़ा दिया, ठीक है,
मैंने कहा लेकिन दिस इज द सैड रियलिटी कि यूनिवर्सिटीज पढ़ा लेती हैं लेकिन बच्चों को जॉब नहीं मिलती। गोरा खामोश बैठा हुआ, यूं किया उसने। इसका मतलब है सही कह रहे हो। उसने बीच में बोला हाँ तुम सही कह रहे हो, इसका हम क्या करें? तो मैंने कहा इसका मसला यही है कि वो जो है ना, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं तो उनको पुश करता हूँ और बात करते करते बहुत सारी बातें कर जाता हूँ। तो उसने कहा हाँ तुमसे, उसने फिर मुझे बड़ी चीजें बताई। उसने कहा कि भाई एडम उस बंदे का नाम था, यानी कि आदम। आदम मुसलमान नहीं, लेकिन उसने बड़ी अच्छी बातें बताई। उसने कहा भाई हमारे ऑफिसेज हैं, ठीक है ना, और हम डायरेक्टली रेगुलेटरी बॉडीज के साथ ना काम करना चाहते हैं कि हम अपनी चीज स्टैब्लिश करें। हमें ये एजेंट वेजेंट जो है ना, ये बहुत धोखेबाज होते हैं। हमें गलत स्टूडेंट ला के देते हैं, पकड़ा देते हैं, स्टूडेंट भाग जाता है, 10 मसले हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं हमारे साथ, कह रहे तुम लोग के साथ बात है कि तुम लोग ऑलरेडी रेगुलेटेड हो। मैंने कहा हम तो भाई सख्त रिक्वायरमेंट्स है, 1 साल लग गया इसमें काम करने में। तो उसने कहा कि हमारे जो ऑफिस है ना, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश। उसने एक बड़ी अजीब सी बात की, बड़ा लगा पता है। और खैर मुझे वो लगी बात, लेकिन वो नहीं हुआ। उसने कहा कि भाई इंडिया से हमारे स्टूडेंट आते हैं, सब जगह से आते हैं। पाकिस्तान, उसने कहा कि ना असल में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो प्रोहिबिटेड कंट्रीज हैं, वहां हमने कैप लगाया हुआ है क्योंकि लोग पाकिस्तान में जाली काम करते हैं। उसने कहा कि तुम्हारे पास से, लेकिन उसने इनडायरेक्टली बोला कि तुम्हारे पास से बच्चा पढ़ के आता है तो हम उसको ले लेंगे क्योंकि वो तुम्हारे पास से पढ़ के आ रहा है ना, तुम सारी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, एजुकॉल की, ये फलाना फलाना सब कुछ। पाकिस्तान में लोग जाली कागजात बना के बाहर अप्लाई करते हैं। इंडिया में भी ये काम होता है, ऐसी बात नहीं है। इंडियंस पकड़ में नहीं आते, पाकिस्तान पकड़ में आए। इंडियन होशियार है ठीक है, और वो अपना दूसरे काम भी करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि इंडियन में गलत काम करते हैं तो पाकिस्तान का ही नाम आ जाता है ये भी एक बड़ा मसला है। ठीक है, सो दैट इज अ थिंग, बट there's a lot of other things that we're looking into and it takes time. तो तुम्हें जो भी इक्वलेंसी करानी तुम्हें वहां से करवानी पड़ेगी। यूसुफ तुम यहाँ बैठे हुए हो यहाँ पर? जी फैसल भाई। वो जो है ना स्ट्रीम के ऊपर कमेंट्स नहीं आ रहे, तो तुमने वहां पर ना सेकऑप्स को बताना है, एसएसऑप्स को, कि स्ट्रीम के ऊपर फैसल भाई कह रहे हैं कमेंट्स नहीं आ रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? उन्होंने कोई फायरवॉल की सेटिंग चेंज की, क्या की है ना? जी मैं चेक करता जी नुमान साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, जी बोलिए। जी सर, मुझे ये पूछना था, ब्लॉकचेन डेवऑप्स ट्रैक और ब्लॉकचेन डेवऑप्स एंड सिसऑप्स ट्रैक्स, इनमें डिफरेंस क्या है सर, इन दोनों में? सॉरी, ब्लॉकचेन और डेवऑप्स और ब्लॉकचेन और और डेवऑप्स, ब्लॉकचेन सिसऑप्स। वो 3 नाम, एक में तुम्हें 2 नाम आ रहे हैं, एक में 3 नाम आ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस, किसका एक डिफरेंस किसका हुआ? जी सिसऑप्स सर, का? मतलब जी सिसऑप्स का, तो इसमें इसके बारे में सर मुझे डिटेल नहीं पता, सिसऑप्स के बारे जब तुम उसका पेज खोलोगे मोहम्मद नुमान, तो तुम्हें पेज पे नजर आ जाएगा कि इसमें क्या कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें क्या कोर्स पढ़ रहे हैं, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सिंपल सा सवाल है ना ये, ठीक है? में। जी, और सर एक चीज़ और बस सर, सर जो मतलब जिसका ग्रेजुएशन नहीं है, अगर ये ट्रैक वो कंप्लीट कर लेगा तो वो भी जॉब सिक्योर कर सकता है? 2 चीजें हैं, अगर वो ट्रैक कंप्लीट कर लेता है तो कंप्लीट तो वो सिर्फ अटेंडेंस करके भी कर सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक एग्जाम पास नहीं करेगा। हमने सारे सर्टिफिकेट्स हटा दिए जो हम पहले इशू करते थे, अब तो यूके गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है ना, उनकी तरफ से आता है, वही इशू करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ एग्जाम लेते हैं। तो सर्टिफिकेट की सर फीस होगी सेपरेट? उसका एग्जाम फीस है, हमें एग्जाम देना पड़ेगा। ओके ओके। हाँ, जैसे सर सिर्फ इसके अंदर ये चाहिए कि कंप्लीशन चाहिए कि मैंने कंप्लीट कर लिया, इसमें लेटर दे सकते हैं तुमको, इसने अपने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर दिए बस। ठीक है ना, एग्जाम नहीं दिया, उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, एग्जाम तो तुम्हें और देना सर पड़ेगा, एग्जाम तुम्हें जी करना पड़ेगा। 3 ट्रैक्स हैं तो तीनों के एग्जाम होंगे? एक एग्जाम होगा, मतलब कि एक बड़ा एग्जाम इंटरव्यू प्रेप और उसका एक ही एग्जाम है। एमसीक्यूज के एग्जाम बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो वो तुम ओवर द कोर्स ऑफ 3 महीने तुम दे सकते हो। ठीक है, तकरीबन 3,500 एमसीक्यूज हैं, तो तुम 35 के क्वेश्चंस के 100 बैंक्स करोगे, 100 बैंक्स, 35 एमसीक्यूज के 100 बैंक्स करोगे। इसकी अनाउंसमेंट आने वाली है, तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर असाइनमेंट है, और फिर इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, थैंक यू सर। ये तरीकेकार, हमने ये तरीकेकार रखा है असेसमेंट करने का। ठीक है, जी कोकब साहब बोलिए। मैं यहाँ पर जरा वो भी खोल देता हूँ चैट जो है, जी बोलिए। Assalamu alaikum, Faisal bhai. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, जी। Faisal bhai, I wanted to ask that doing CCST and cyber defense track standalone, would it be sufficient, or do I have to complete the SysOps and DevOps as well? Since I'll be working on the standalone side of cybersecurity, like I won't be
into Even if cloud? Even if you, cyber defense advancement track is different. We haven't released it yet. That's a different Yeah, track. in the future. Yes. If you want to go into the IT audit side or, you know, consulting side, then cyber defense track is for you. But wherever you go, we always recommend the DevOps and SysOps are the two tracks, because the reason is wherever you go, you will be faced with one thing, and that is going to be cloud. So if you don't know the cloud technologies, if you don't know how they work, you know, how they operate, if you don't know the DevOps aspects of the application development, it will be difficult for you to find, you know, better positions. You will be able to find positions for deployment cloud cybersecurity, as we call it right now, the CCST. We named it as Cloud Cybersecurity Track, but they named it as Deployment Cloud Cybersecurity. So the official name is DCCS, right? Deployment Cloud Cybersecurity. Now that track itself, if you study it, you can find jobs in cybersecurity and IT consulting. It can help you in terms of going through all of those things and working in the SOC or whatever the case is. But the more you study, the more you can go in the upper echelons of different organizations, right? I am recommending everyone to study two tracks as a bare minimum, right? DevOps and SysOps. But the way AI is penetrating into the market, so study DevOps and SysOps, find a job, because with DevOps and SysOps, you will be studying cloud cybersecurity anyway, right? Find a job, settle yourself down, and then go for AI and big data. Because AI, the way that AI is penetrating, it is going to become a tool. Just like a browser, you use a browser, you know, Google is feeling the impact of ChatGPT, because all the Samsung phones recently have been announced by Samsung that they will replace Google browser with, you know, basically Microsoft browser, right? So all the dominance that Google used to have, it's fading away now because of the ChatGPT, the OpenAI. However, Google has been working on general, you know, generative AI for quite some time. They call it the GG AI something, GAGI, or this is their code name, something like that. They've been working on that for quite some time. It hasn't been finalized yet. They call it as the Larry Page, you know, the Google founder, they call it like the AI God, right? But no one has seen it yet. But you know, they are going to push these things. So these technology companies will fight with each other, Microsoft and Google. But to answer your question, if you can afford this, do this. Once you secure the job, then do the other things, right? And so secondly, when you were working at the CISO, so what was your domain specifically? Was it web security or application security? The CISOs, they handle everything. The CIO handles the whole organization, right? So I've worked as a CISO, as a CTO, and as a CIO, right? So I've worked as all the three aspects, except the only one I was not was a CEO. I became a CEO of my own company, right? But even in this company, I call myself as a CIO, right? So essentially, the domain for the CISO is applications, infrastructure, governance, risk, and compliance, all of these areas, right? For the whole business. For the CIO, it's the whole organization, the marketing, the finance, and everything comes under the CIO. And the CIO reports to the CEO. But the CIO also works with chief financial officer, chief risk officer, all of these other guys as well. But it secures the infrastructure and other aspects as well. So it depends on organization to organization how the hierarchy is. Alhamdulillah, when I was working, I was managing the legal, the marketing, everything. And that's exactly the same thing I'm doing in my own company as well. I have other different C-level officers, the CMO, the chief marketing officer, the chief operation officer, and everything. But you know, I essentially manage the C-level, and the C-level manages all the other teams. That's the hierarchy, right? So it depends on organization to organization. All right. Next person is Muhammad Faisal. Yes, go ahead. Go ahead, Muhammad Faisal. Okay, the next one is. अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. Yes, go ahead. सर मैं कैट का स्टूडेंट हूँ। 3 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था,
तो मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, जिसमें से एक CSSP भी है। तो जो लिंक्डइन का कोर्स था, उसमें उसको देखते हुए मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट किया था, तो मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया है CISSP के लिए ना, तो जॉब के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे अभी जॉब के लिए जाना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए अभी अभी अगर तुम्हें जॉब मिल रही है और तुम्हें अप्रोच किया है, जाओ इंटरव्यू दो, इंटरव्यू से तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या पढ़ा हुआ है। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड तो अकाउंटिंग का है, तो अभी मैंने कैट स्टार्ट किया 3 मंथ पहले। जब तुमने अकाउंटिंग की थी तो अकाउंटिंग, तुमने बैकग्राउंड में अकाउंटिंग में क्या किया था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर। जो मेरा मेजर रोल रहा है वो इंटरनल ऑडिट कंपनी में मैं रहा हूँ, इंटरनल मैनेजमेंट ऑडिटर। अकाउंट तो सीमा वगैरह करते हैं, ICMP करते हैं, तुमने क्या किया? CMA सर, CMA। CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा, यस, USA का। अच्छा USA से किया था, तो तुम्हें कोई जॉब अब मिली हुई थी, क्या कर रहे थे? मैं जॉब कर रहा था इंटरनल ऑडिट इधर लाहौर में ना, पाकिस्तान में। तो मैंने अभी रिसेंटली अपनी फील्ड स्विच की है, अकाउंटिंग से IT की तरफ आया हूँ। हाँ, अगर तुम्हें काम करना है, अपना CV अच्छा सा बनवाओ, कोर्सेज कंप्लीट करो, बिग 4 में अप्लाई करो। बिग 4 ओके ओके। मैं कौन सी फर्म ने रीच किया है? बिग 4 है, कौन है वो? ये पाकिस्तान में है कोई, पहले मैंने कभी नाम भी नहीं ज्यादा सुना, अल खिदर के नाम से है कोई, अल खिदर टेक्नोलॉजीज। आई डोंट नो, पाकिस्तान में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मुझे इतना नहीं पता। बट यस, यू कैन अप्लाई। गाओ, जाओ इंटरव्यू देकर आओ, पता चल जाएगा तुमको क्या पैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यू विल नो मोर इंशाल्लाह। ओके, मैंने बस ये कंफर्म करना था कि मुझे जाना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। नहीं, तुम देखो, वेट, मैंने कि इंटरव्यू देने में क्या है, ज्यादा से ज्यादा ठीक क्या होगा, करेंगे, कर देंगे तुमको, बट यू विल नो। ठीक है ठीक होगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी जी। मच। मुसाब बिन खालिद, बोलिए। जी बोलिए। हेलो सर, वो स्ट्रीमलेट का आपका लॉगिन नहीं हो रहा मेरे पास। हाँ, उसमें इन्होंने ये फायरवॉल्स, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है ना, उसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे ये लोग। आई सस्पेक्ट कि उसकी वजह से जो है ना मसला हो रहा है। आप सवाल यहाँ पूछ लीजिए, मैंने चैट खोली हुई, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं सवाल। ठीक। और सर वो कैट का, सर मैं असल में मेरी अभी अभी बैचलर हुई है BSIT के अंदर। और पाइथन मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, आपके पैसे मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डेटा साइंस की तरफ चला जाऊं या उसमें, डेटा साइंस में इंटरेस्ट तो है मगर वो पता नहीं है किस तरीके से मैं फॉलो करूं कोर्स को। डेटा साइंस में कोई जॉब्स नहीं है, तो मैं डेटा साइंस में इटसेल्फ कोई जॉब नहीं, जब तक तुम्हारे पास इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस हो कि जिसमें तुम उसको साथ पढ़ते हुए डेटा साइंस लेके चले जाओ ना, तो फिर तुम्हें मिल सकती है। अगर तुम डेटा साइंस में बैचलर्स भी कर लोगे, मास्टर्स भी कर लोगे, तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाके कर लो अगर तुम्हें करना, यू विल नो। ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बताया जाता है कि डेटा साइंस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बड़ी जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा साइंस खाली विदाउट किसी इंडस्ट्री के पढ़ोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने उसको उसके साथ इन्फ्यूज किया, तो तुम्हारे ज्यादा अच्छे चांस होंगे अपने आप को मजबूत करने में और तमाम चीजों को देखने में। राइट। तो मेरा मशवरा होगा तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हें करना है, तो पहले तुम ना डेवऑप्स सिसऑप्स को पढ़ो, उसमें पढ़ के आगे निकलो, जॉब सिक्योर करो, फिर डेटा साइंस की तरफ जाना, AI की तरफ चले जाना। डेटा साइंस, AI जो है ना, वो डेटा साइंस को एक छोटी सी एक्सटेंशन बना के खा जाएगा। ठीक है। तो अगर तुम्हें करना है, तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू रेकमेंड इट टू यू। ठीक है सर, ठीक है सर। जी शहीर साहब, बोलिए, क्या सवाल है आप? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ADB CS की है अभी रिसेंटली, और 25 के ऑलमोस्ट PKR में कमा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कोर्स का ट्रैक आपका लिया है, तो अब मैं नेक्स्ट कैट का लूँ या साइबर डिफेंस का लूँ? मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी, यानी मैं स्विच कर लूँ, इतना हो जाए कि मैं मज़ीद आपके जो है ना वो कोर्सेज बाय करने के काबिल हो जाऊँ। तो काइंडली आप मुझे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखो, सारी डिफरेंशिएशन वहाँ लिखी हुई है। डिप्लोमा में ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा सब कुछ है। कॉर्ड्स तो एक छोटी सी चीज है, ठीक है ना। डिप्लोमा में जाओगे तो तुम्हें डिप्लोमा में ज्यादा चीजें नजर आएंगी, ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, ज्यादा एक्सपीरियंसेस तुम्हारे ज्यादा अच्छे होंगे। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो कोर्सेज का डिफरेंस है, हैंड्स ऑन लैब्स का डिफरेंस है, देयर टन ऑफ थिंग्स जो तुम्हें वहां पर मिलेंगी। राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तुम अपने आप को इतना मजबूत करना चाहते हो कि मैं करके लग जाऊं, उसमें कर लूं, तो तुम कोशिश करो अपने आप को सिसऑप्स और डेवऑप्स को पढ़ने की कोशिश करो। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी कर लो, उसको करके निकाल लो, वो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। इतना मजबूत कर लो अपने आप को कि तुम कहीं पर भी जाकर ना काम कर सको। दैट शुड बी योर प्राइमरी गोल ना, जिसमें तुम करके निकल सको। तो दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन फॉर यू। जी शाहजेब हसन, बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
जी सर, मैं खुद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने आईसी में किया हुआ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनेंस, बट लाइक आई एम डूइंग अ फाइनेंस जॉब एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म में। लाइक मेरा यही गोल था कि फाइनेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती एआई, और लेकिन अभी कुछ टाइम से चैट जीपीटी आई है और इस तरह की चीजें आई हैं, तो मेरा खुद मतलब मैं अपने काम को मैं बहुत जल्दी कर पा रहा हूँ। मतलब लाइक ईमेल्स लिखना या फाइनेंशियल मॉडल्स में हेल्प करना, तो मैं लाइक इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। बट लाइक आई फील माई सेल्फ के ये चीज मतलब मेरी जॉब तो रिप्लेस शायद कर ही देगी, बिकॉज सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। वी डोंट नीड नाउ। आईसीएमपी किया हुआ ना, आईसीएमपी के जो भी व्हाटएवर, ठीक है ना, एक जी जी एआईसीपीए और आईसीएईडब्ल्यू ना, जो इंटरनेशनल चार्टर्ड यस यस अकाउंटेंट जी जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स जो है ना, उनकी एक पूरी रिपोर्ट आई है, मैंने बहुत पहले दिखाई भी थी, ठीक है जी ना। जी उनकी वेबसाइट पे तुम लिखो आईसीएडब्ल्यू, लिखो ब्लॉकचेन और एआई यस रिप्लेसमेंट ऑफ अकाउंटेंट, तुम गूगल पे लिखोगे तुम्हें मिल जाएगा। उसमें लिखा है कि अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगी। क्यों? राइट ब्लॉकचेन जब आएगा तो लेजर वेरिफिकेशन का काम खत्म हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट खत्म हो जाएगा, राइट राइट ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगी, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में तुम्हें कोई बहुत चीते बनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आदमी भी होगा भी कर लेगा। क्योंकि देखो चैट जीपीटी तो तुमने अभी देखा है ना, अभी इसको लोग इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी के साथ इनोवेशन में काम कर रहे हैं, दे आर इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर न्यू थिंग, ठीक है। राइट तो राइट ऑलरेडी चैट जीपीटी जो है ना, एआई एक चीज है, और इस साल के एंड में 100 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी, दे विल बी वाइप्ड आउट। मगर अगर तुमने इसको हार्नेस कर लिया, सीख गए, काम कर लिया, तुम बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है। राइट क्योंकि फाइनेंस का चाहिए होगा, जिसका फाइनेंस का बैकग्राउंड सब कुछ हो, लेकिन वो उनको, लेकिन ऐसा बंदा भी चाहिए होगा कि यार वो जो है ना दूसरी चीजों को भी वेरीफाई करके देख सके, सब कुछ कर सके ना। तो मैं नहीं कह रहा, मैंने रिपोर्ट दिखाई थी उनकी ना, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट्स और ये जो सारे हैं, ये 2020 से वो कहते हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं सुना तो तुम लोगों का काम चला जाएगा, ऑलरेडी बोलते आ रहे हैं ये। और हम 2023 में accountants and auditors, देखो, these are the jobs, decreasing job demands, they will slowly they will be wiped out। ये पूरी रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट थी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये सब जगह का डेटा लेते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के हिसाब से देखते हैं कि, और प्रोडिक्शन करते हैं कि क्या होगा ना, ठीक है। अब तो ये इस prediction के लिए भी लोग एआई को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जी जी तो अब तुम अंदाजा कर लो कि क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। लाइक आई प्रिपेयर फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर स्टार्टअप्स और मैं तुमको बात बताता हूँ, देखो ये जो ना कंटेंट राइटर्स हैं, खलास खत्म हो गए, राइट ब्लॉग लिखने वाले खलास खत्म, कपीश, यानी इटालियन में कहते हैं ना कपीश, खत्म, ठीक है। ये जो है ना इसी तरीके से रेज्यूमे डेवलपमेंट वाले खत्म, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी जो है ना जो ग्राफिक डिजाइनर है, खत्म, डाली आ गया। तुमने डाली चेक किया? तुमने नहीं देखा, तुम डाली देखोगे तुम बोलोगे कि यार ये क्या चीज है। Yes, sir, I use it like it's like writing a text and it will made the video or text. हाँ, तो हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, हमारी जो एडवर्ड्स की वीडियोस बन रही है, हम सिर्फ उसको ना पैरामीटर्स देते हैं, पाकिस्तान, करप्शन, फलाना फलाना, ये वो सब कुछ, ठीक है ना। तो वो वीडियो बना के देता है, कैन यू ठीक है ना, उस सर्विस में पैसे देना, ठीक है। बट इट्स हैपनिंग एंड इट इज हैपनिंग सो फास्ट। सो हमारे पास जो टीम थी, मैं उनको बोलता आ रहा था, देखो मैं आपको अपग्रेड करो, अपग्रेड करो, अपग्रेड करो, सुनते ही नहीं थे मेरी बात। मैंने कहा देखो, उनको ऑफिस में ये लड़के जो है शुरू से काम कर रहे हैं, 4-4, 5-5 साल हो गए, ठीक है ना। मैं इनको बोलता आ रहा था, देखो यार बात सुनो, ये करो यार, ये करो, ये करो, ठीक है। वो लोग लड़के सुनते ही नहीं थे बात। आज ये सिचुएशन है, जो लड़के हैं ना वो परेशान है कि यार ये क्या हो गया, ये तो मसला हो गया। मैंने कहा देखो यार, मैं ऐसे रख नहीं सकता कि तुम्हें बिठा के तनख्वाह दे रहा हूँ, ठीक है ना। यू टू लीव बिकॉज तुम काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग एंड इट्स हैपनिंग वेरी फास्ट। देखो ये एडवर्ट है, ये हमने गाना के लिए बनाया था, अभी गाना में चल रहा है, ठीक है। इसको देखो, जस्ट लुक एट दिस एडवर्ट। हाँ, मैं तुम्हें 1 मिनट सबर करूँ। तो ये उसने एआई ने खुद हमारा पूरा एडवर्ट बनाया है, देखो। It's made up of AI? जी जी, देखो। Are you tired of the corruption and struggle? उसने गाना के लिए वही एक्सेंट भी उठाया जो गानियन का एक्सेंट होता है, हमने इसको बोल के ना, ये भी हमने करवाया। ये अजोर के अंदर क्लाउड में पूरी सर्विस है जो हम इस्तेमाल करते हैं, देखो।
Are you struggling to find a job and basic necessities? The government seems to be doing nothing to address the issues, but we have a solution for you. Introducing study and office accredited diplomas, the pathway to a better future with our accredited diploma programs. You can secure a job in 3 to 6 months in the emerging technology sector. Now, हम क्या करते हैं कि हम म्यूजिक यूज नहीं करते सब चीजें. Right. But the point I'm saying is कि हमने इसको जो पैरामीटर्स देते हैं वो उसी पैरामीटर्स पे निकाल के देता है. And you will surprise what is happening. So you can see how things are changing. So ये सारी जो चीजें हैं ना, they are changing very very fast and they will uproot many careers. So जाओ अपने आप को अपग्रेड करो भाई और बैठ के पढ़ाई करो. But how can I upgrade like because मैंने इतने 4 साल 5 साल ली बिजनेस की नॉलेज ली, फाइनेंस की नॉलेज ली और एक मतलब एक 70-80,000 मेरे पास ऐसे लड़के भी हैं जो ACCA करके जॉब कर रहे हैं और वो जॉब छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनको उनकी जॉब्स खत्म होती हुई नजर आ रही हैं. हमारे पास टाइम है, अगर 2 घंटे तुम 3 घंटे रोजाना बैठ के पढ़ाई कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ, ठीक है ना. वीकडेज वीकेंड में तुम ज्यादा टाइम लगा सकते हो, 4-5 घंटे सुबह ठीक है. तो तुम जो है ना 6 महीने में तुम कहीं और पहुंचे. राइट जी सर, मैं बिल्कुल एक ऐसा पाथ देख रहा हूँ मैं स्टडी के लिए कि मैं किसी तरीके से इस चीज में मर्ज हो जाऊं और मैं पढ़ सकूं. और मेरा मशवरा होगा गो पाथवे, बिल्ड दैट पाथवे आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. ये यहाँ जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, मुसलमान, नॉन मुस्लिम जो भी यहाँ बैठे हुए उनको अपना पाथवे बाहर बनाना चाहिए. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. ये इकोनॉमी जो है इट्स अ फेल्ड स्टेट, मुनाफिक स्टेट पाकिस्तान, ठीक है ना. डॉक्टर इस पे ऊपर बोलते भी थे लेकिन कोई इस पे बात ही नहीं करता. इसलिए मुझे ना ये सारे ड्रामेबाज लगते हैं. एक आलिम था जो खड़े होके बोलता था कि यार गलत कर लो, गलत को सुनता ही नहीं था उसकी बात, ठीक है ना. वो तो बोलते बोलते चला गया. अल्लाह ने उसको अपनी अच्छी जगह पे बिठाया हुआ है, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मतलब कि अल्लाह ताला उसको बहुत आगे तक उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाहुम्मा आमीन. जिस तरह वो गया नजर आता है कि नेक लोग कैसे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए, बड़ी बड़ी जायदादें, सब कुछ हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो दे आर सपोर्टिंग दैट सिस्टम ना. इफ दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर पार्ट ऑफ दिस, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. जी अब्दुल राशिद साहब बोलिए. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर मेरा टॉपिक के रिलेटेड तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन सर मैं बहुत कंफ्यूज था, मतलब काफी दिनों से का सवाल पूछना चाहता था. सर मैंने इंटर किया हुआ है इन आर्ट्स में, तो आगे बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया है. तो सर मेरी मैट्रिक में मतलब मेरी साइंस मैट्रिक मेरी साइंस के साथ है. तो आगे सर मेरा IT में मतलब इंटरेस्ट है, मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में. तो सर मैं अगर क्या मुझे IT में आगे जाना चाहिए पहले तो तुम्हें ना आर्ट्स में कोई करने की जरूरत नहीं है. जो तुम्हारे पास टीचर पढ़ा रहा है वो भी फारिग है, तुम भी फारिग बन जाओगे, ठीक है ना. उसके पास सिर्फ टीचिंग जॉब है, तुम्हारे पास कोई टीचिंग जॉब भी तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वो वहाँ बैठा हुआ, ठीक है ना. जी सर वो मतलब अगर ऑप्शन इंटर के बाद सर कोई और नहीं था फिर जैसे आर्ट्स में. आर्ट्स क्या पढ़ा रहा है तुमको, क्या पढ़ा रहा है आर्ट्स में, क्या सब्जेक्ट्स हैं बताओ जरा मुझे. सब्जेक्ट्स क्या हैं? अनफॉर्चुनेटली सर मैट्रिक के बाद सर वो आर्ट्स में चले गया था. नहीं आर्ट्स में तुमने सब्जेक्ट्स क्या पढ़े, मुझे नहीं पता ना, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से. तुमने क्या पढ़ा? सर मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है और एजुकेशन में इस्लामियत. देखो इस्लामियत तो अलग सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, हर चीज में इस्लाम होना चाहिए, ठीक है ना. अल्लाह ताला जो है ना क्या नाम है, आद व समूद को जो ना वो बता रहे हैं, उनके पैगंबर बोल रहे हैं, शोएब अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं, अपनी कौम को कह रहे हैं कि देखो भाई जो ना वो तथवीफुल मीज़ान करते थे, यानी कि मीज़ान में कमी कोताही करते थे ना, जो नाप तोल है ना उसके अंदर, बिजनेस ट्रांजेक्शन खराब, ठीक है ना, ठीक है. दिस इज ट्रांजेक्शन ना, ट्रांजेक्शन खराब है, ये हमारे सारे लोग करते हैं, ठीक है. तो अल्लाह ताला ने वो मना कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार अपनी नमाज, अपने इस्लाम को अलग करो और ना बिजनेस को अलग करो. यानी उस जमाने में उन्होंने सेकुलरिज्म की बात की. अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह ने क्या किया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया. तो जो कहते हैं ना हर बात में तुम इस्लाम की बात करते हो, मैं इस्लाम की बात करता हूँ, तो भाई मैं गोरे को पढ़ाता हूँ उसमें भी इस्लाम की बात करता हूँ, मैं शुरू भी इस्लाम की बात से करता हूँ क्योंकि हमें करना जरूरी है, अल्लाह ताला का अंबिया का तरीका है ये, ठीक है ना. तो इस्लामियत कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इस्लामियत हर चीज में एम्बेडेड होनी चाहिए. साइंस पढ़ा रहे हो हर चीज में होनी चाहिए, ठीक है ना. तो इस्लामिक कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बना के गलती की है, सबसे पहली गलती है. दूसरी चीज क्या है, जो तुमने सोशियोलॉजी पढ़ा है या एजुकेशन पढ़ा है, वो तुम्हें भाई कहीं कोई नौकरी नहीं देगा.
जी ये AI जो है ना टीचर्स की जॉब खा जाएगा स्कूल में। जी दिन सर। देखना, लोग घरों में बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे। अब उनके लिए पढ़ाना आसान है, बच्चा माँ बाप कहीं फंस जाएंगे ना, बच्चा कहीं फंस जाएगा ना, बच्चे को सिर्फ AI को इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो बोलेगा कि भाई बार्ड टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बार्ड बोलेगा दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बोलेगा यार जबरदस्त, ठीक है खत्म। टीचर की कहाँ जरूरत है, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। माँ बाप सब्सक्रिप्शन देंगे कि भाई इसको वहां पर, बल्कि ये सर्विसेज आगे जाके फ्री हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इतना यानी कि, लेकिन इस पे लोग पैसे बना रहे हैं क्योंकि AI में उनको पैसा भी बनाना है। तो वो लोग जो है ना इसकी सब्सक्रिप्शन देंगे, तो वहां बोलेंगे यार टीचर को हटाओ, फारिग करो, तुम सारी टीचर्स फारिग घूम रहे होंगे। नीचे का जो माशरे में जो सबसे नीचे जॉब्स है ना, ये सारी ऑटोमेशन खा जाएगी। ऊपर आके ऑटोमेशन रुकेगी क्योंकि उसको बहुत बड़ा डेटा कंज्यूम करना है इससे पहले कि उसमें इतनी इंटेलिजेंस हो कि वो दूसरी चीजों पे काम कर सके। तो तुम्हारे पास 40-50 साल हैं अभी, इससे पहले कि तुम जो है ना बिल्कुल यूनिवर्सल मॉडल पे आ जाओ, ठीक है ना। उस वक्त तक जंगें हो जाएंगी, ठीक ठाक जंगें शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि सर वो आप गाइड कर दें सर, कहाँ है, किस मतलब स्टार्टअप IT से कैसे लेना चाहिए, मतलब मैं आप तुमको किस तरह बता रहा हूँ गाइड तुम्हें करें? क्या करना चाहिए। तुम बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन खत्म करो, जहाँ भी लगा है, जिस कॉलेज में भी, छोड़ो। तुम यहाँ पर बैठकर डेवऑप्स से सॉफ्ट बैठकर पढ़ो, जाके पढ़ना शुरू करो। 6 महीने अगर तुमने पढ़ लिया अच्छी तरह, तुम जॉब पे बैठ जाओगे, उसके बाद बोलो मुझे बाहर जाना है। लेवल 5 की क्वालिफिकेशन होगी तुम्हारी, तुम्हारा 1 साल बैचलर्स के 2 साल माफ हो जाएंगे, तीसरे साल की फीस दोगे। आज जब मैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से बात कर रहा था, उसने कहा कि तुम्हारे पास कौन से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। मैंने कहा मेरे पास सबसे ज्यादा लेवल 5 और लेवल 6 RQF के आ रहे हैं। कह रहे हैं, उसने कहा क्यों। मैंने कहा मैंने कहा तुमने मुझसे पूछा नहीं कि क्यों। उसने कहा हाँ क्यों। मैंने कहा देखो ये बात हो रही थी ना, तो मैंने कहा देखो इसलिए मेरा, मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी फीस है 17,000 पाउंड सालाना, ठीक है ना। तुम 16-17 हज़ार पाउंड सालाना फीस लेते हो। मेरे पास वही बच्चा जो है ना पूरा पाउंड, तुम पाउंड ब्रिटिश पाउंड ले लो, मेरे पास वही बच्चा जो पूरा कोर्स है ना वो 15 से 2,000 पाउंड में पूरा बच्चा कोर्स पढ़ लेता है। तो अगर उसने 2 साल यहाँ पर मेरे पास एक डिप्लोमा किया तो उसके 2 साल बच गए, यानी कि उसने 30 से 35 हज़ार पाउंड बचा लिए। आखिरी साल में तुम्हारे पास वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको बाहर की वो आखिरी साल लगाना है ताकि उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सके। वो बच्चा खामोश हो गया बल्कि। मैंने कहा ये हमने किया है, लेकिन मैं तुम्हें वो स्टूडेंट भिजवाना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम्हें टेंशन नहीं होगी, तुम्हें फॉरेन स्टूडेंट तैयार मिलेगा, तुम्हारे पास आएगा, पढ़ेगा और जॉब पे बैठ जाएगा, ठीक है। तुम्हें भी फायदा है, तुम्हारी रिटेंशन तुम्हारे पास कम होगी, यानी कि तुम्हें 3 साल के लिए बिठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा इसलिए स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा लेवल 7 पढ़ रहे हैं लोग, लेवल 6 पढ़ रहे हैं, बैचलर्स डायरेक्ट मास्टर्स में आ रहे हैं, लेवल 7 पढ़ रहे हैं ताकि बैचलर सारा एग्जाम हो जाए, आखिरी के एग्जाम देखें, निकाल लो, PSW पकड़ो। तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो उसने कहा कि यार बिल्कुल ऐसा है, और टेक्नोलॉजी जो है ना बड़ी फैसिनेटिंग है और चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है। मैंने कहा हाँ, तो यूनिवर्सिटीज को ऑलरेडी पता चल रहा है। ये गोरे से बात कर रहा था, ठीक है ना। और वो मीटिंग, मैं हर मीटिंग रिकॉर्ड करता हूँ, मैं जिसके साथ मिलता हूँ मीटिंग रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। और जो मेरी अपनी मीटिंग्स होती है मैं सब रिकॉर्ड करूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो सामने है वो पीछे है। ये नहीं कि सामने कुछ और है पीछे कुछ और है, ये बड़े भाई लोगों के साथ मसला है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई देखो जो बात है ना साफ साफ सीधी सीधी बात करो। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें उसमें बचाना है अपने आप को, तुम 3 साल का बैचलर्स करोगे, 2 साल का बैचलर्स आर्ट्स में करोगे, खुआर हो जाओ। अपने आप को प्लान बनाओ, यहाँ से बाहर निकलो। वो दूध वाले का बच्चा निकल सकता है तो तुम भी निकल सकते, ठीक है ना। धोबी का बच्चा निकल सकता है, तुम भी निकल सकते हो। आइसक्रीम वाला बच्चा मेरे पास पढ़ा, वो काम करता है, शोएब मेरे पास आया था, पढ़ाई कर रहा है अपनी डेवऑप्स की, जॉब भी करता है हमारे पास, एफिलिएट से पैसे भी कमाता है, बहुत मेहनत करता है। मैंने कहा बच्चे तुम इस तरह मेहनत करो, मैं तुम्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट दूँ, ठीक है। तो हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है कि जो अच्छे बच्चे हैं मेहनत करें सब, हम उनमें उनको फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप भी देंगे, ठीक है। तो वो भी हम कर रहे हैं। तो अभी हमने जो एफिलिएट प्रोग्राम है इसमें जो लॉन्च हो रहा है, जो बच्चा 1000 बच्चे लेकर आएगा, या तो हमसे कैश प्राइस ले ले या फिर हमसे बैंक स्टेटमेंट ले ले। वैसे तो वो इतने पैसे कमा चुका होगा 1000 बच्चों पे लाने के 8% के हिसाब से, कि वो ऑलरेडी पैसे कमा चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन उसको हम लोग फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप भी देंगे। तो मैंने कहा जाओ बैठ के मेहनत करो उसके ऊपर, वो लॉन्च होने वाला, उसका एडवर्ट बन रहा है। द पॉइंट आई एम सेइंग इज के यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू वर्क स्मार्ट, ठीक है ना। सो अपने आपको प्लान करो कि तुम्हें क्या करना है। जी समीर खान साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी जॉब हो गई नाफे डेवऑप्स पढ़ने से ना। कहाँ पर हो गई भाई तुम्हारी जॉब समीर खान? सर मेरी लाहौर में जॉब हुई है सर। मैं बड़ी अजीब कहानी है, मतलब 2 जगह जॉब होगी और मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ पे जाऊँ। एक एक जगह और मिनट चेहरा दिखाओ पहले। देखो मेरे पास तो कोई यहाँ आता नहीं है, जब वो वहां जाके बता देते हैं मैं बोलता हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं होता ना, मैं बैठता भी नहीं, कम बैठता हूँ, सर। ठीक है। तो वालेकुम समीर सर। खान साहब मतलब कि
तुम्हारी कहाँ जॉब हुई है, तुम कहाँ पर काम कर, मतलब कि तुमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा तुम? सर मैं पिछले साल आया था जून में ना, कैट ज्वाइन किया था। उससे पहले मुझे 2019 में पता था आपका चीज़ों का, तो यूट्यूब पे मैंने देखा, मैंने कहा यार, मैं सच बताता हूँ, मैं कहूँगा कैसा बंदा है, पैसे दे के चीज़ें बेच रहा है, यूट्यूब पे तो मिल जाती हैं चीज़ें। हाँ, तो यूट्यूब पे तो दीन, तुम लोग यूट्यूब पे दीन भी ढूंढते हो ना, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस सर ये एक बड़ी 2000 गलतफहमी है। देखो यूट्यूब जो है ना, वो एक खेल तमाशों का चैनल है भाई। यूट्यूब की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है पता है तुमको? एडवर्ट्स। नहीं, ऐड, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर कोई बिल्कुल आपकी मसला बात नहीं से है, बिल्कुल एग्री मसला नहीं करता है। हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। बल्कि जो मेरे दोस्त हैं जो ये काम कर भी रहे हैं ना, जो यूट्यूब चैनल उनके एडसेंस वगैरह, ये मैं उनसे कहता भी हूँ कि ये चीज़ ना करो, और मैं उनको आपकी वॉइस भेजता हूँ। जो आपकी वॉइस होती है ना, वो आप जो ग्रुप में करते थे, वो वो मैं भेजता था कि हट गया, मेरे पास टाइम नहीं है। या तो मैं यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशन का सब काम कर लूंगा, या फिर मैं जो है ना ग्रुप में बैठ के जवाब देता रहूंगा। इसलिए मैं ग्रुप पे नहीं बैठता। मैं कहता हूँ मुझे कोई ग्रुप में कोई ऐड नहीं कर सकता, मैं किसी सर से वो बात आपने सही किया, वो आपने सही किया लीव करके। सर वो बहुत फजूल गुफ्तगू होती थी। उसके बाद ना जो पढ़ने वाले होते थे वो तो पहली बार वहां आते नहीं थे, जो नहीं पढ़ने वाले होते थे वही ज्यादा वो सवाल देखो जवाब। तुम्हें यूट्यूब पे सारे जो लोग हैं ना, तुम किसी की वीडियो देखोगे ना, उसमें तुम्हें अगर कमेंट्स नजर आएंगे तो उन कमेंट्स में तुम्हें बड़ा एक खास पैटर्न नजर आएगा। देखो लाइफ में ना पैटर्न्स ढूंढा करो, पैटर्न्स। मैथमेटिक्स में बिल्कुल एक चीज होती है फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर एक कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं गॉड मैथ्स, यानी अल्लाह की मैथ्स भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कायनात में जितनी चीज पैदा की है ना, उसके अंदर नंबर का पैटर्न है, तुम्हें पता है? अल्लाह सर ताला नहीं। दुनिया के कायनात के सबसे बड़े मैथमेटिशियन है, क्योंकि सारे उलूम हमें अल्लाह से मिले हैं, अल्लाह हमें दे रहा है। बिल्कुल तो अल्लाह ताला बिल्कुल सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है। तो तुम जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें पैटर्न, तो हर चीज में तुम पैटर्न ढूंढा करो, पैटर्न का है तुम्हें नजर आएगा। कोई किसी की वीडियो देख रहा है, उसके 40-50 सब्सक्राइबर्स हैं, 100 सब्सक्राइबर्स हैं, जो बार बार वो ना कमेंट्स देते हैं, कमेंट्स, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त, आप ही मेंटोर है, फलाना फलाना, ठीक है। वो तुम्हें नजर आएंगे। तुम पैटर्न देखोगे ना, हर वीडियो में तुम्हें नजर आएगा। 2-3 दफा तुम देखोगे, बोले यार ये सब, और वो सारे के सारे फारिग, ठीक है। बिल्कुल। तुम भी जो है ना एक टाइम लगा रहे थे यूट्यूब पे बैठकर। यूट्यूब भाई एंटरटेनमेंट चैनल है, वो नहीं गाने सर, सुन। टाइम नहीं लगाया था मैंने, टाइम नहीं लगाया था मैंने। सिर्फ मैंने एक्चुअली ना, मेरे जो वालिद साहब हैं वो थोड़ा इस साइड पे है ना, वो जैसे आपको, वो एक इदारे में ऐसे हैं, तो मैंने साइबर सिक्योरिटी करनी थी। मैंने कहा कि उनके इदारे में जाता हूँ, तो मैंने वैसी सर्चिंग वगैरह की, तो मुझे वहां पे नजर आया। फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि थोड़े जरा हालात जरा सख्त भाई हो गए थे। पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं ना, उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। मैं DGFI से सबसे ऊपर से लेके नीचे तक सबसे मिला हूँ भाई। सर गलतियां नहीं मेरे करें, वालिद साहब को, मेरे वालिद साहब की सैलरी आधी मिल रही है। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत बुरे हालात हैं। इट्स अ फेल्ड स्टेट। एनीवे, तुमने क्या पढ़ा? तुमने कैट पढ़ा, फिर सर तुम डॉक्टर्स में चले गए, अब मैंने तुम सर कहाँ थे? कैट पिछले साल कैट लिया था, मंथली पे था कैट में, मंथली पढ़ता रहा। जो मेरा पिछले महीने कैट खत्म हुआ है ना, और मैंने डेवॉप्स ले लिया था अक्टूबर में। और डेवॉप्स में मैंने डॉक्टर्स पढ़ा। डॉक्टर्स पढ़ने के बाद, असल में मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ, 8वें सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर मेरा ना। तो चीज़ें वगैरह मैं पढ़ता रहा, डॉक्टर पढ़ा, डॉक्टर मैंने बैच पढ़ी। बैच के बाद मैंने ना, वो सर आपने जो क्यूबरनेटिस का सर शम्स दिए हैं, कमाल बनते हैं सर वो, उनके मैंने क्यूबरनेटिस पढ़ा है मैंने। और क्यूबरनेटिस से सर आप यकीन करें, मेरे सी कैट के अंदर CK मेरा क्लियर हो गया। जबरदस्त, माशाल्लाह। अभी वो और मैंने करवा सर, रहा है, अभी इसकी चारों क्वालिफिकेशंस वो करवा रहा है, और वो हमारी सर्वलेस आर्किटेक्चर की तमाम जो इंटर्नशिप के अंदर ना, उसको लीड कर रहा है। जी सर, वो बल्कि मुझे पता भी चला कि वो बता रहे थे कि वो आजकल ना आपके आपके प्रोग्राम्स को क्यूबरनेटिस के ऊपर कर रहे हैं। एक्चुअली मैं वो लिंक्डइन पे मैं बात कर रहा था उनसे इंटरव्यूज के हवाले से ना, तो मैंने कहा आपका वो वॉल्यूम। लाइव क्लासेस में बैठेगा। उसकी जी उसकी जो पोजीशन है, वो मैनेजर है हमारे पास यहाँ पर, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन आर्किटेक्चर उसके डिपार्टमेंट का नाम है। और वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करता है। और देखो, जो काम के लोग होते हैं ना, वो मेरे साथ बैठते हैं। जो काम के फारिग होते हैं ना, वो नहीं बैठ पाते, वो भाग जाते हैं। जब मैं इनसे सवाल करता हूँ ना, भाग जाते हैं। मैं कहता हूँ ये 2 नंबर आदमी, हटा दो उसको। सर, वो इंटरव्यू से 5 मिनट पहले ना मैंने उनसे सवाल थे। सुबह मैंने मैसेज किया कि मेरा इंटरव्यू है, 5 मिनट पहले ना उनके सारे रिप्लाई आ गए। जो उन्होंने बताया था मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू में सारा वो बोल दिया। फिर मुझे लाहौर बुला लिया उन्होंने, तो लाहौर में दोनों एक जगह इंटरव्यू दे के निकला हूँ, दूसरी जगह से कॉल आ गई कि आपका इंटरव्यू हुआ था, तो हम आपको ना ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं अब। तो सर आप यकीन करें, मैंने 5 से 6 जगह अप्लाई किया था, और ना अप्लाई करने मुझे कॉल आई है, सब जगह से कॉल आई है। और सैलरी की बात करते थे, तो मैं नींद, एक बार तो मैं नींद में था, तो मुझे उन्होंने सैलरी का, कहते हैं आपको कितनी सैलरी चाहिए? मैंने कहा मैं तो 1 लाख एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। तो उन्होंने कहा चलो हम आपको 1,20,000 देते हैं। तो मैं नींद में ही था, तो मैंने फोन काटा, मैं उठकर शीशे में देखा, यार मैंने कहा मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ और मुझे 1,20,000 कह रहे हैं, 6 डिजिट में डायरेक्ट। तो थोड़ा हैरान भी हुआ मैं। उसके बाद अब
दोनों जगह से कॉल आई है और दोनों जगह से ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि ना आपको 1 लाख दोनों मतलब 6 डिजिट में दोनों दे रहे हैं। और कहाँ से पढ़ रहे हो, किस जगह से पढ़ रहे हो? सर मैं मुल्तान से हूँ और NCBA मुल्तान से पढ़ रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एक। क्या है, क्या चीज़ है ये? सर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, NCBA। NCBI का मतलब क्या है, किस चीज़ का सर एक्रोनिम? नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। हाँ, तो अगर तुम वहाँ के जो बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं, उनकी किसी की जॉब होती है? सर मेरी क्लास के बच्चे, उनको सर इंटर्नशिप नहीं मिल रही सॉफ्टवेयर हाउसेस में, और सर यहाँ सर फुल टाइम जॉब। ये डिफरेंस है ना भाई, तुम्हारे पास ये तुम नहीं हो। लम्स के बच्चे मेरे पोजीशन होल्डर बैठे हैं, लम्स के बच्चे पोजीशन होल्डर 25,000 रुपए में काम करते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? ठीक है, वो जो लड़के हैं ना, वो मेरे पीछे आके भागते हैं कि भाई मुझे हमें रख लें, आप काम के लिए रख लें। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास टाइम नहीं है। एनीवे, मेरी जो टीम है वो तो सारी बाहर जा रही है मेरे साथ। ठीक है, देखो भाई बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? समीर। मैं तुम्हें नंबर दिया है तो तुम ना सर मैंने आपको मैसेज किया था, वो एक्चुअली ना एक्सपीरियंस लेटर का एक जरा आ रहा है इशू। मैंने आपको मैसेज किया था, आपने कहा था HR कर दूंगा। मेरे पास मतलब कि ना फोन मेरे पास मेरा नहीं है अभी। ठीक है, तो मुझे मैसेज करो तो मैं तुम्हारा वो देखता हूँ, वो तुम्हारा हो जाएगा। बट देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, अभी तुम पैसे जमा करो अपने लिए बाहर जाने के लिए। अगर तुमने सर वो पूरा प्लान है इंशाल्लाह, मेरे वालिद साहब से बात की है और वो इंशाल्लाह प्लान है मेरा ये फरवरी में। हाँ, अगर तुम UK चले गए यहाँ से, तो तुम जो है ना बड़े आराम से एट अ यंग एज 50-60,000 पाउंड पर एनम कमा सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है सर, स्टूडेंट्स को टाइम कम है, स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, वो जो आप कहते हैं ना 5 चीजें, कैट और डेवऑप्स और सिसऑप्स, मैं सच्ची में कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सर ने सही कहा है। डेवऑप्स के साथ ना आपको, जैसे वो जो कासिम साहब का वो है ना सिसऑप्स, आप वो करें लाजमी, क्योंकि अपने जो सिसऑप्स जो एडवांसमेंट डिप्लोमा जो सिसऑप्स है ना उसका, जी बिल्कुल वही AWS आर्किटेक्चर पूरा पढ़ाया है, बताया है सब कुछ। लोग उसको पढ़ के ना बड़ी बड़ी जगहों पे सोल्यूशन आर्किटेक्ट के तौर पे जॉब्स कर रहे हैं। 6 फिगर सैलरीज उठा रहे हैं, $1.5-2 लाख डॉलर अमेरिका में उठा रहे हैं। ठीक है, एनीवे जज़ाकल्लाह खैर। समीर, तो मुझे अपना मैसेज भेजना, अभी मैसेज भेजो, मैं बस उठने वाला हूँ, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा इंशाल्लाह। बाकी ये कि देखो, जिन लोगों की जॉब्स होती हैं, जो भी ना, तुम्हारा मेंटरशिप का प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, उसकी एप्लीकेशन बन गई, सब कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग भी हो गई है, आ रही है। तो उसमें भी तुम जो है ना अपने लिए लोगों को गाइड कर कर, एक होते हैं ना मेंटोर होते हैं, लोगों का टाइम ले लेते हैं, खुद तो कुछ किया नहीं होता, बस बोलते हैं ये ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, इधर चले जाए उधर चले जाए, घुमा फिरा के तुम्हें बेच देगा ना पैसे। मैंने वो बुक भी खरीदी थी, 2 बुक्स खरीदी हैं, वो उर्दू के अंदर थी। वो एक बहुत बड़े साहब हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, 2 किताबें ली हैं मैंने, आके पढ़ना शुरू की। एक थी इक्था एल्गोरिथम और एक और थी, तो वो मेरे 2 समय पढ़े, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा तो कॉपी पेस्ट करके खाली ट्रांसलेशन करके दी हुई है। भाई देखो बात सुनो, देख ये बहुत सारे लोग जो है ना, वो क़यामत के दिन जब मैं आऊंगा ना, तो मैं आई होप एंड आई मेक दिस दुआ टू अल्लाह कि मैं लोगों के सामने खड़ा हूँ, बोलूँ भाई कि फरिश्ते बोलेंगे इसने तुम्हें पैसे देने, इसने तुम्हें पैसे देने, इसने तुम्हें पैसे देने। तो मैं अल्लाह से बोलूँगा कि अल्लाह ताला मुझे इनके हसनात नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उस दिन जो है ना आप किसी से पैसे नहीं लेंगे, डॉलर नहीं लेंगे, आप उनकी हसनात लेंगे कि भाई जो है ना, इसने तुम्हारे ज्यादती की, इसने तुम्हारे चोरी की, जो भी किया तुम ना, अब ये तुम इसको वापस करो। ठीक है ना, उस दिन उसकी नेक अमाल लिए जाएंगे, अगर नेक अमाल नहीं होंगे तो वो मेरे बुरे अमाल लेगा। ठीक है ना, तो भाई मैं उसको बोलूंगा कि ये मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मैनी पीपल ओ मी, बट मैं अल्लाह से बोलूंगा अल्लाह ताला मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। आई आस्क यू टू गिव मी एज पर योर शान। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, ठीक है ना, एज पर योर स्टेटस अल्लाह, तो योर स्टेटस इज वेरी हाई, सो आई आस्क यू टू गिव मी द हाईएस्ट एज पर योर स्टेटस। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुनिया में तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अपनी एक आदत बनाओ कि ना टाइम सेव करो। यूट्यूब जो है ना एक बड़ी पॉइजनस चीज है, जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत बड़ी पॉइजनस चीज है, और इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है जिन्होंने एक फॉलोइंग बनाई हुई है और वो लोग इस पे कर रहे हैं। देखो दज्जाल की सबसे बड़ी फॉलोइंग होगी, पता है तुमको? दज्जाल की सबसे बड़ी फॉलोइंग होगी। ठीक है ना, तुम देखना, ही इज गोइंग टू यूज द सेम मीडिया, ही इज गोइंग टू यूज ऑल द सेम थिंग्स, बट इमाम मेहदी अलैहि सलाम की बहुत छोटी सी फॉलोइंग होगी, 313 लोग आगे उनको खाली, हालांकि दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान है इस पर। ठीक है ना, तो सिर्फ 313 आगे क्यों भैया देंगे, क्यों देंगे भाई? कभी सोचा इसके ऊपर? जरा सोचा करो ना कि हाइपोथेसिस किया करो कि क्या होता है ना, तो पैटर्न्स ढूंढा करो हर चीज में, जिंदगी में, तो तुम्हें पैटर्न्स, तो जो मैं इशारा करता हूँ ना, ये 5 चीजें, तो अबू बकर सिद्दीक के पास एक बदू आया, उसने कहा मुझे बताओ कि मैं क्या अमल करूं कि मैं सीधा हो जाऊं। वो बैंडेड था, चोर था वो, ठीक है ना, डाकू था,
मैंने कहा भाई नमाज पढ़ो, पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलो, अल्लाह भी ईमान लाओ, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना तौहीद अपनी दुरुस्त करो, नमाज पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद तुम ज़कात दो, हज करो और रोज़ा रखो। ये 5 चीज़ें ना, 5 उंगलियां, ऐसे कहा 5 उंगलियों में से 5 अमाल करो। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ इस तरह से कि भाई ये 5 चीज़ें लेके चल लो। अभी तुमने पढ़ लिया ना, तो तुम अपना लेवल 6 का डिप्लोमा, लेवल 7 का डिप्लोमा, AI ऑफ से जो भी करना है पैसे जमा करो, अपनी लिए फीस जमा करो, बाहर निकलो। इफ यू गो आउट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो तुम जाते ही वहां पर जॉब पे सिक्योर करके बैठ जाओ। वो जो साजिद है, साजिद वो भी पेशावर का है, कोई पंजाब का है, कोई कहाँ का है, सब पहुंचे में बाहर लड़के, तो जॉब्स कर रहे हैं। वो भी जो है ना, जो जिसकी ओकाडो में जॉब नहीं थी, जापानीज कंपनी में, जो आया भी था बीच में, और वो लड़का जो है पाकिस्तान से गया था, वो मुझसे फोन पे, वो मुझसे लड़ रहा था फोन पे, ठीक है ना। मैंने जो है ना, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने डिग्री कर ली है, जॉब नहीं मिल रही, मेरा कोर्स खत्म होने वाला है, 1.5 साल मुझे हो गए जॉब। मैंने कहा तुमने कोर्स पढ़ा क्या? नहीं। मैंने कहा जाओ कोर्स पढ़ो, फिर मुझसे बात कर। मैंने कोर्स पढ़ा, 3 महीने में उसकी जॉब हो, ठीक है। तो मेरी भी 6 महीने हुई है। हाँ, तो पढ़ने से जन्नत जो है ना, जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जन्नत कैसे मिलेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपनी जबान और जो तुम्हारी शर्म गाहों के बीच में एक जगह है, जो चीज है, इसकी जमानत मुझे दे दो, आई प्रॉमिस यू जन्नत। राइट? कितनी बड़ी बात है। जरा हदीस पढ़ा ना, सोचा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें जन्नत मिलेगी, अपनी जबान तुम्हारे मुंह, जो तुम्हारे मुंह में है, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की मुझे जिम्मेदारी दे दो, दैट यू विल प्रोटेक्ट इट, अल्लाह विल गिव यू जन्नत। ठीक है। हमारे स्कॉलर्स को इस तरह से ना मसाजिद में बैठ के वो बात करनी चाहिए, कोई करता ही नहीं। अजीब बात करते हैं, उल्टी सीधी, पता नहीं क्या अजीब खुतबा होता है। तो जब पाकिस्तान में बैठता हूँ, तुम क्या खुतबा कर रहे हो, क्या है यार, नमाज पढ़ो, जल्दी करो, बस फारिग करो यार। तो देख रहा होता है, मुझे इतना बड़ा पेट निकला होता है, देख रहा होता है कि क्या बात कर रहे हो, ठीक है। जल्दी नमाज पढ़ो, जल्दी सारे फारिग करो यार, ठीक है, तुम टाइम जाया करो सर। दैट इज द प्रॉब्लम। सो जब तुम ये सीखो, जाओ अपने घर में सबको दावत दो, बोलो भाई सही इस्लाम पे चले, मेहनत करें, अल्लाह ताला ने जगह बहुत रखी हुई कामयाबी, ठीक है। चलो, बहुत बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह, मुबारक हो तुमको, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए। माँ बाप जिंदा हैं, बाप का नाम लिया, माँ जिंदा है, तो उनसे दुआ करवाओ। खुसूसी दुआ है मेरी, रमज़ान का महीना है, आज 28वां रोज़ा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतैन फिल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जा भी रहा हूँ अभी, ठीक है ना, मस्जिद नबी जा रहा हूँ इंशाल्लाह, पहले तो उम्रा करने जा रहा हूँ, वहाँ भी जाऊँगा। तो दुआ करते रहना अल्लाह ताला से, और तुम्हारे पास भी पैसे जमा हो ना, तो फिर तुम भी जाओ, शुक्र अदा करो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काम आसान करे, ठीक है। चलो इंशाल्लाह, चलो, जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।